Captain of Rohit Sports, please come for the toss.
Both the teams, 12 men, please report to the commentary box. Both the team, please come. And Rising Star, don't delay it because it will be problem for you only. Then you have to play 3 overs or 4 overs, later matches. Then don't blame for the organizer. बोली टाइम दी त्यांना लेट मॅच भी 8:30 आम्ही काय करतो अरे टूर्नामेंट गेलती आको थोड़ा वार्म अप भी करते थे हमने मालूम नहीं मैं डायरेक्ट ओरा कर दूंगा नहीं कुछ कर सकता ना भैया अभी टूर्नामेंट करने को बैठे हमें सब अपनी मर्जी से टूर्नामेंट बनेगा नहीं टूर्नामेंट खेलते आको थोड़ा वार्म अप करने को थोड़ा इंटरेस्ट भी देते नहीं Hello. If the within a 2 minutes, if the 12 men has not come, it will be -5 for the both the teams. This is a first and final call for the 12 men of the both the teams. लल्ला का नाम क्या है? पुरुषोत्तम. नाम पुरुषोत्तम यादव. लल्ला का नाव है रे. पुरुषोत्तम. लल्ला लिख दो लल्ला. लल्ला दा भी वो यादव भी तो डालना भी उन टेंशन में आएगा. लल्ला यादव भी बताएगा. मालूम है मुझे. हमने मालूम नहीं. सुपर सब है. सुपर सब नहीं. सुपर तो बोलो नहीं. हमने मालूम नहीं. 64 बस भाई भाई बस. समीर का समीर. समीर समीर सुनो सुनो. दिए दिए 2 टीमों को दिया. अभी तीसरी टीम आई उन्होंने रेडी कर रखे हैं. पानी पहुंचा सबका. तो देंगे ना. अब साहिल को खाने पहला. एक दिन बोलो. विकी. अजय अजय. आपको पानी लेके जाने. नंबर आला रे. काय मरे. टेंशन ना. वर्षा की ए ला रे समोसा पान ला रे. अपना दिया मैं. इधर अलाउड नहीं. हां अपने बोल को देने का साइड. दे रहे चले. गाना मार पंजीगाव नहीं दे.
So we're on our path. Score moves to 10 after 3 deliveries. Hey, Anand, di. Score is 16 for no loss. Lalla playing on 9 and Sami is 6. In comes Manoj to bowl second over. Wide declared by Naresh Pasekar. That's the reverse shot from Lalla. The boundary.
And just for 1 run, score moves to 22 for no loss. That's the U6 from Samir. Sandesh is out. $28 for 1. Second over is progress. Punched away to the short covers for a single. Wonderful morning to all the viewers, listeners, and the followers of this Masters League 2025. What a day we had yesterday, and all the 5 teams tied together with 2 matches, 2 wins each, and then we have to go for bowl out for all 5 teams. So dot ball here at this moment, going good guns at the moment, looking at the strike rate and the run rate of this team. Is 29 for 1 at the end of 2. In with the third over, Sandeep Vinod Wilson to Sandeep Kodikar, short ball, pulled away and just getting an extra bounce there. Well played, I must say. He didn't go too hard towards the ball, just timing the ball and getting the right placement. 33. Not the best ball that Vinod Wilson would have liked to bowl. Yeah, he bowls fabulous disguising slower balls. This was slightly short. Well bowled, back of length, straight. Trying to play on the leg side, missing it altogether. Had a great day yesterday in terms of cricket. Lot of high scoring games, chasing down, and matches going into the last over. A similar sort of day is expected today as well, since it's an auction tournament. Another one. Once again, hard length, back of length. By the time Sandeep Kodikar wanted to lift, the ball just hurried and came quickly. And today the day is going to be very, very different. The ground conditions, the playing conditions are very drastically different. There will be something in for the bowlers. We are not playing on the matting surface today. It's a well-rolled surface, flat, and will be something for the spinners as well. Oh, that's cracking shot, absolutely breathtaking. Just one bounce, it might just fall short by a quarter meter. Excellent shot here from Lalla. So 38.
The margin for error on this wicket is very, very less. Run out opportunity, and yeah, appeal there, but I think I don't think so. He has collected the ball. The keeper. That will be a quick single. I think both these players, especially Sandeep Kudikar, if you're talking about, he is quick. He is playing in the regular tournaments for Sheldon Blasters. He is in the regular team, so he is quite fit. He makes it very easily at the striking end. Oh, that's very nicely picked up. He waited for that extra second and hooks it away towards that square leg boundary with a blazing shot. Very nice. Parshuram comes in to bowl over number 4, 45. So they are going at 15 runs per over, exactly 15, which is not too high. We have seen scores being chased somewhere around 70. And if these two are bowled well here by the Rising Ponda team, then they have certainly opportunity. Oh, this might be another one whacked away on the leg side. You can't bowl it there straight to Ramlalla Yadav. He will butcher you all day long with those boundaries and sixes on the leg side. He's very strong over there. He's an excellent player. That's a 50 up with that 6. Another one slogged, but I think he played it little early. Wanted to slog in the square leg region. That's the area that he likes to get the 6s. $16 runs coming off the first over, 13 runs coming off the second, 16 back in the third. Too short, lucky to get away, I must say. Sandeep Kudikar will feel that he has missed out on that a bounty or a 6-hitting ball. You can't bowl it that short at this on this wicket, which is flat. I think only the variations and the cutters are going to work here on this deck. Another one. This is much better. Looking for a wide, but I think he shuffled. Umpire rightly prompting that it's not a wide. Getting away with a wonderful morning here. The match played between Rising Ponda and Rohit Sports. Left it all alone, and definitely once you take the first stance on the offside, you leave it. You can't be called a wide. Your first stance is towards the offside. That stance is taken when umpire is going to ascertain. Well, there is a fine difference between trigger movement and shuffle. So I'll explain you that in a while. Meanwhile, a single to mark the end of over number 4. It's 54 for the loss of 1. So we are having a look at both these teams. At this moment, we are looking at the combinations of the bowling. It was something like mix in terms of the results, what we saw yesterday.
Insura is winning both their first two games, but then losing the next two, and ended up with just 2 wins after 4 games. Opportunity was there for Ganapati Warriors as well to go directly through, but in the end they went through bowl out. Progressive Honda also has a chance of winning the last game and directly going through. This is in the air. This should be a chance. Fielder there and taken easily by Vicky. He is a safe catcher. He wanted to play it at the long off region. Could not get that much of distance and found man straight to the captain Vicky. So there's another gone down. Lalla Yadav in trying to up the ante. It's 54 for 2. Another slow ball. I think yes, umpire feels that it is out. Umpire was into the position. Maybe it has hit the back of the bat rather than is what umpire feels. The batter is telling that it has brushed my arms. But the decision has been taken, and back-to-back wickets here for the bowler with a wonderful disguised slow ball. 54 for 3. Little bit below the par with 45 for the loss of 1 in 3 overs, and what an over this is. This has absolutely changed entire course of this match. He's taken a hat-trick in the very first match in the morning, and 3 top order wickets. Is Ram Lalla Yadav the first one to depart, second was Gopinath, and the third was Sonraj. These are the 3 wickets picked up in 3 successive deliveries, picking up the hat-trick. We didn't see a hat-trick in the entire day yesterday, but today in the morning, very first match, the very first innings, Pandurang. This time he bowls a full toss, and this is smacked over the top. That's 6 runs. That is what Rohit Sports were eagerly waiting. A 6 in this over. They get towards 60 runs. It's not too high at the moment, the score. They need another one. Nicely bowled. Good slower ball. Chance of a run out. No, they'll be settling with a single. And that marks the end of so 1 ball left here. So right in the block hole. Perfect execution of a wide Yorker. And at the end of 5 overs, Rohit Sports managed to get 62 on the board for the loss of loss of 4 wickets. 62 for 4, and
63 is the target set for Rising Point. I think it's a very good recovery. 45 after completion of 3 overs. You would take it any time. 45 for 1. And you would have liked to get somewhere around 70, 75, which was definitely on the cards. But last 2 overs, definitely a well-disciplined bowling. They bowl well, bowl with a pace, bowl with change of pace, variations, slower leg cutters. And the hat-trick was the highlight of this entire first innings from Pandurang. Now it's time for the toss of the next game. Musab Challengers versus Padnam Strikers. Requesting the captains to kindly come for the toss. Musab Challengers and Padnam Strikers. फिल्डिंग सेट करात. जस्ट 2 मिनिट्स आसतले तुमकां परत एकदा ग्राउंडार येवन फिल्डिंग सेट करपाक. ते नोट करात. लकी नंबर दो त्याचा लकी पण आमच्या इथून 13 मोडाचा नंबर यानी विल्सन इला ओय ओय टी-शर्ट पॉइंट राहतो त्याला टीम मध्ये .63 runs to chase here, and there comes the opening pair of Vinod Wilson and Vicky Kharapurkar. So the star icon player and the top pick of these auctions are both being sent up the order as opening pair to take the advantage of the fielding restrictions and to give them a blazing start. Once you get a quick start, it always makes the things much easy for the batters lower down. Lokesh with the ball. Take that. Can't bowl it down to Vinod Wilson. He's been hooked away towards the 5-leg region, and a magnanimous 6 to begin this run chase.
With this pace and with this length, you just can't bowl it to Vinod Wilson. He's very quick. Another one that was tried. It's off the hips. Once the ball goes to the keeper, you can understand with the pace where the ball heads hit the body of the batter. Whether it is the body or the bat, umpire, that much of experience we have. Sadgiri Naik and Naresh Parsekar officiating umpires for this first match of day 2, Group A fixtures. Musab challengers and Penham strikers. Requesting captains come for the toss fast. Musab challengers, Penham strikers. Play straight to the man in the short mid wicket region. Musab challengers, Mahesh Sakarkar has reported here well in time. So requesting Penham strikers to report immediately for the toss. Hit away, chance, opportunity. No, he's just watching the ball go over his head. He timed it just well enough to get it over the top and another 6. Hammered for 2 sixes and a single that was of the wide ball. So 13 on the board so far. Another one, same result that was of the first ball, but this time it went high and it went more longer, and this is turning out to be very, very expensive. 19 already coming off this over, and still I think balls left in this over. It's not good looking sign here for Royal Sports. They've not posted a big total on a deck which is conducive to batting. It's a batter's paradise. It's a flat deck. Going for the switch it, playing and missing altogether, and marks the end of over. 3 sixes seen from the bat of Vinod Wilson of this over. 19 without loss, rising to under. Good to meet you after a long time. Super sub introduced here by Rohit Sports. Heaved away. I think he will find a gap. Yes, he does. Gave it a full toll, full body power, and finding a boundary. Ashok Binda going as a super sub here. (23). They are moving very quickly at the moment, not afraid of hitting the big ones.
Another one. Once again, slightly short. And the sixes are going bigger and bigger. Well, they are matching shot by shot here. Vicky is showing that if Vinod can hit, I can also hit couple of sixes here on the leg side. Not looking good for Rohit Sports. The bowlers are not looking penetrating enough into the batting order. Not threatening at all with their pace, nor variations. This was much better. This was much better because this was slightly slow leg cut up action. Rolling the fingers over the ball. Need to do something different. You can't come and bowl flat out here on a flat deck. You will be peppered for a lot of runs. This was a straight one going over the top and taken very nicely. Well taken by the man. Good relay catch here. Understanding that he was losing the balance. He was almost going out of the rope. But he clinched on to the catch and transferred the ball to his partner Sandeep Kodikar, who takes a easy one. So good relay catch here by Rohit Sports. That gets them the first wicket in the form of Vicky. That's nice shot. That's very good shot here. There is no failure for the switch. It is bowling slightly slow, so ample of time to play this reverse shot. कितल्या लेट येतले उडी कमी घातल्या त्यांच्या प्रॅक्टिकल झालं पाहिजे तुम्ही डायरेक्ट घुसपा दे कितले 5 4 उडी एक कमी. So a single taken here to finish over number 2 is 34 for the loss of 1. Another chance, opportunity here. Sandeep Kodikar saying it is mine, and he takes it. He is a safe catcher. Gets rid of wicket number 2. Parshuram goes back. Is 34 for 2. So wide call here, way outside the line of off stump.
Need to tighten more screws. Need to take more wickets here, especially of Vinod Wilson, who is the key. Well bowled. That's the kind of tight bowling, disciplined bowling required. Bowl few dot balls and pile up pressure, not only on the striker but also at the non-striker. Should be another chance and taken. Another one bites the dust here. And Rohit Sports are making a good comeback in this match. 3 wickets have been taken at a time. They were going so strong with Vicky Parapurkar and Vinod Wilson going for an opening stand of 29 runs. But at this stage they lost 3 on 35. Won the toss and deciding to field first in the next match against Musab Challengers. Coming up next. Before that, we have got a match on our hands. 35 for the loss of 3. 29 runs needed. We are into over number 3. So single taken, giving strike to Vinod Wilson, who was off strike for quite some time. Vinod Wilson needs to be on more strike. So Ashoka bowling from round the wicket, looking at this wicket. Left it all alone. They got a protection in the deep extra cover, and that's why Vinod Wilson understands, if I want to play the switch hit or reverse, I have to get it over the point region rather than going it straight to the extra cover. Good comeback, I must say, by this bowler Ashok for his side. Well bowled once again. Very nice bowling and keeping the things well in control and tight for the batters. Nothing much given away in this over so far, and keeps his Rohit Sports team in the contest. 3 overs done and dusted is 36. 36 for the wickets. Sub has done a super job here for Rohit Sports. That's the one. That's the one that they were searching for, Rising Ponda. Attack has been welcomed with a 6. 22 needed of 11 balls. Sagar on strike. Another one try. There is no one. There is a big wide gap. This might be flat 6. Yes. Lalla is trying and chancing his arms, but it's not. Easy. That's easy from Vinod Wilson. Lalla doesn't have the pace.
55. Just 8 more runs required. Another one. That's also gone. That's straight out of the screws and straight out of the ground. Vinod Wilson wanted to finish that in style in over number 4 itself, but he has to wait for his opportunity. But I think this over has definitely gave a clear indication where the match is heading. It's 25 that has been score of this over, 61 for the loss of 2. 2 runs required of the last. So just 2 needed. Once you score 25 of the penultimate over, that is very, very expensive at the standards the match was heading. The match was going at around 13 to 15 runs per over, but if you concede 25 is plenty runs. And I think that should finish that. That should finish that in style here from the bat of Sagar. Well, he has brought an impactful change for this side. Once he has come, he went hard after Lalla, got couple of sixes and then made the things easy for the captain. So good cameo here from Sagar, giving company to Vinod Wilson, who has had an incredible run with the bat as well as with the ball, and leading from the front, I must say, for Rising Ponda, winning the first game comprehensively in the end. For the Rising Ponda, the man who had changed the game when it was going towards the batting side, the first hat trick of this tournament was picked up by Pandurang, and Pandurang has been adjudged as the player of the match. टर्नमेंट स्ट्रायकर्स परत एकदा तुमका सांगता जातीतले बेगीन मातशे ग्राउंडार या ना तुमचे ओव्हरी कट जातल्यो. जो टायमार दिला त्या टायमार आमचे मॅचेस ज्यो आसा त्यो चालू आसात आनी आमकां सगळ्यांक 5 ओव्हरीच्यो मॅची खेळपाक जाय. त्या खातीर तुमी विना विलंब मातशे ग्राउंडार बेगीन देवात.
मातशें बेगीन चालू करात मॅच. So we saw a one-sided affair in the previous game. Rising Ponda winning it quite handsomely in the end. TOURNMNT strikers requested to send an extra man here for the names. 12th man is compulsorily required in the commentary box to assist the scorers, both here and online, to update with the names. Man of the match, there is a cash prize of 1,000. So we want to know the exact player who gets this cash prize of 1,000 and the trophy. Meanwhile, the previous game it went to the player, the bowler, who picked up the first hat-trick of this competition. Masters Cup 2025 coming from Pandurang of Rising Ponda. So he will be handed over the cash prize of 1,000 and this trophy from our guest shortly. One of the legendary players with the ball in his hand, Rajendra Bulkar. Raju, a very popular face. Played for Goa Police for plenty of years. Then went on to play for his respective Panchayat municipality teams, and also for the winner of the double wicket tournament organized by BCCI in leather ball cricket. Is no mug player. Don't get such accolades when you're playing at all India level, and he is in the podium finish. He is in the trophy finisher when you're talking about leather ball cricket for the veterans cricket double wicket tournament. And such is the star Raju Dabulkar with the ball in his hand, and it's with the bat Anant Mandrekar and Sajjad. Well driven, trying to actually go towards the offside over the extra cover. Maybe could not get the right part of the bat. Just getting an inside part, moving in towards the mid-on region, getting trying to get a single, but yet to open the account. Slower ball, pulled away, no one there. Easy shot here for Mandrekar. Gets the first boundary for Musab Challengers. Meanwhile, we are presenting the player of the match award here to Panduranga. It will be presented at the hands of Mukhtar Kadri. The veteran player of Goa. So again drives it nicely, but straight to the man, one bounce. Anant is a very skilled player in terms of playing on both sides of the wicket. He's good for the drives. He's also a good hooker and puller of the tennis ball. Indication was given in the previous ball itself, and he went back and across to play that hook shot for 4 runs. Drives it firmly, drives it very firmly. Too much of power, too much of fuel behind that shot, and gets another boundary in this over. Last is cracking shot. Well played here from Sajjad. The first one is a straight down the ground. This was over the covers, very firmly and fiercely struck. Margin for error is very less on this deck. So now they have to think where to keep the fielders for Sajjad.
Another one, well struck. Man in the deep, so just going to be single. I think it's Ram Nagwekar fielding at the wide long of region. A decent over here for the batting side where they picked up couple of boundaries. It's 14 without loss at the end of one. So in comes the over number 2. Smiles exchange here by the batter and the bowler. Sajjada understanding that the pace of the bowler was slightly slow and the bat came really quickly. He is a very strong character. You can see the build as well, very strong, and he uses all masculine force with good timing as well, backing that force. Nitesh, wide call here. Not too much of extra pace, but his bowling is gently. Many of the batters like the ball coming on quickly onto the bat because they have got quick bat speed. Someone like Sajjad, who is strongly built, backs his power and backs his instincts. Well bowled, targeting the toes of the batter. Single taken in the square leg region. Most of the teams, what we have witnessed is they have got 2 to 3 good bowlers, but they are lacking of the 4th and 5th good bowling option. We are in the veterans 45 plus 40 plus tournament here, and in terms of the age, or where we are talking about 40, you don't get too many bowlers who are quick enough. Yes, somewhere around 40 42 you might find some odd bowlers bowling really quickly, but most of the bowlers have gentle pace. This time he gets hold of it and gets hold of it pretty well. It's over the mid wicket and another maximum. .22 without loss. Well bowled, well played here by Anant. He's a proper copybook cricketer. When the ball is there to hit, he will definitely go full-blooded for that. Otherwise, he can just play the normal shots if it's a pretty good ball. It doesn't like to give away easy wickets. He has got shots on the offside, square cut, the drives, the on-drive, off-drive, cover drives, and also the slog shots. All-round better, as you can call it. This was a 6 hitting ball. This should have gone out of the park. You can't miss on that. Bowler will feel himself little lucky on that occasion. And a decent over from the bowler Nitesh, and 2 overs gone is 24 without loss.
Ram Nagvekar, the captain of many of the teams hailing from TOURNMNT, but during the Panchayat municipality. Straight hit should be in the gap. There are fielders there to protect the boundary, so just going to be single. Rajan Dabolkar covering a long part of the ground. I was talking about Ram Nagvekar. Don't bowl too often in Panchayat municipality where it's all age category players playing, but here is an opportunity. Straight down and no chance. Absolutely no chance. It was straight on the bat. He hits it hard. Anand Mandrekar finds a good space down the ground and a boundary. Need a good over. You somehow feel Musab challenges, although they are going well, they have not lost a wicket, but they also will be comfortable somewhere around 70, and for that they need one good over of 20 plus runs. Whacked away. Wanted to go on top, but got lower half of the bat. Another single in the mid-wicket region. 30-run opening stand in over number 3 so far. They want to get themselves going for the big shots. They've got a pretty decent bowling lineup, but that 4th and 5th bowling option is going to be, I think, the crucial part in this Masters Cup. Well bowled, excellently bowled here. Diligent bowling from Ram Nagvekar. Wide, I can understand it's down the leg side, but I think the change of pace has definitely fooled the batter. Slower leg cutter was tried, came very slow. The batter was already ready with the hard hands. And that's what experience gets you. Although he's not a regular bowler, but he knows how to go about the things. Oh, this is top class shot. Top class shot here. Uppercut and over the extra cover for a boundary. Too much of room, too much of width, and that's why I tell he's a Anand Mandrekar, where he's got shots on the offside. .36 and make that 42. Straight on the bat, and it is being hammered down the ground. That is Anand Mandrekar for you. One over the extra cover, one straight on, and slightly expensive over, and a good over here for the batting side. 3 overs gone, 2 without loss. So we are into the 4th over. Mahesh Konarkar will also be looking at the proceedings, as is Mohsin, who is there on the ground supporting the team. Musab challenges. This is heaved away, and there's gone. 6 runs. They're 48 now with that 6. Always puts the bowlers under pressure whenever you see 6 off the first ball. Tried hard this time.
taken. Finally, the partnership has been broken here. A 48-run stand has been broken between Anand Mandrekar and Sajjad. Sajjad going for the big one, trying to forcefully play a back foot shot over the covers, and long off region has been taken in the short extra covers. And there's 48 for 1. Sajjad hits back. So wide call here. Another one in the air. Oh, he should have gone for the catch, Raju. Raju should have gone for the catch. He was caught in two minds whether to go forward or whether to lean back. There's the extra bounce of the 70-70 ball which takes it over the top and gets a boundary here. Not the best boundary or not the best shot that we have seen, but certainly the batter will be happy. Salil will have failed. He will have got another wicket. Is popularly known as Ekas Raja, Munna Raja from his friends. Bowled well this over. That's excellent shot. That excellent finish. That is a quality shot from the batter. Slightly full on the offside. Man kept in the deep. It still takes on the challenge of the fielder and gets it over the top. Mahesh Sakalkar comes at number 4. He bats decently. I've seen a couple of innings from his side. He bats decently. Normally, he doesn't get to a chance to bat in his side when he's an icon or a star bowler in a big tournament. Trying to slog on the leg side. Just going to be a single. Anand Mandrekar should be content. Why botheration of a couple of runs when... Oh, maybe it was the last ball. So that is the end of over number 4. 61 for the loss of 2.
decent target that he is going to set to the side chasing Turnham strikers. Uh, and he's not even waiting for the umpire's call. Mahesh Sakalkar is caught behind by Ram Nagwekar and he departs of the very first ball of the last over. Darsaka Stars versus Rising Ponda. Single, yes, it's going to be Anand Mandrekar. He knows it. He wants the strike at this stage, and it's better here for Musab challengers that Anand Mandrekar came as an opener, scored 6, he scored boundaries. Good inning so far. This is another one. That's the reason why he wanted to be on strike. Striking a big one straight over the top. Concedes very less dot balls compared to other batsmen because he has got more shots on the offside. He plays most of the time right shots for those particular right balls. He's a long inning player, just like he has showcased here. Another one tried. This time you expect the batter to go across. It's the last over. So they need to get somewhere around 1 or 2 sixes to get this total, move on to somewhere close to 75. They are hoping and high hopes on Anand Mandrekar to get towards 75 plus. Play and a miss once again. This time the ball kept little low. Still the score is on 68. Captain of Darsaka Stars and Rising Ponda, please report immediately. And this should be a single. Is it? Yes, well fielded. This was the last ball, and 69 is what they managed to get in the entire innings. Well, I think if you talk about Turnham strikers, they will be pleased with the performance, understanding that things should have gone slightly around 75 to 80, but I think they will be happy that they have cut down to 10 short. So they have kept them to 69 and 70 being the target.
is not yet into the veterans category. That shot, that is some shot here. Gave it a full toll and gone long. That is Raju for you. We are expecting the player to be little straight. A good battle, I think, between Rajan Dabolkar and Mahesh Sakalkar. Going for the switch hit, missing it altogether. You can see how quickly it went past not only the batter but also the wicket keeper. But short TOURNMNT was alert. He is taking the challenge here of Mahesh Sakalkar. Raju. High, this might be a chance. And he gives away for 6 runs. That was a chance there. That should have been taken. It's Raju there going for the big one. Gave it everything. It went high. Opportunity was there for the fielder at the long off. But he spills it over the rope. That could have been a big wicket here, Raju Dabolkar. This might be another one, but this is going over the top. This has gone for 6 runs. That's the third 6 of this over. Raju is taking the challenge of Mahesh Sakalkar and is hitting for 3 sixes in the very first over. Meanwhile, we are done with the toss. In the presentation arena, Darsaka Stars versus Rising Point. The toss won by the captain of Darsaka Stars and he has opted to field first. We are back with Mahesh Sakalkar and Rajan Dabolkar battle. At the moment it's 19. Raju once again goes straight and it's one bounce. Expensive over here from the star bowler Mahesh Sakalkar, conceding 23 of the first. 23 without loss after one. Dressing room of the middle order. Excellent bowling. Excellent bowling there. Missed by the batter, missed by the keeper. It might run down for 4. No, well stopped by the fielder. Excellent bowling. This is firing on the toes. Sameer. Slogged and over the top. This is also 6 runs. Just over the top. The jump was right, but it needed a tall fielder. They are going blazing at the moment towards the target, racing towards the target. It's as if though they want to finish it up in 4 overs itself.
Excellent batting from Ram. He is matching Raju Dabolkar at the moment. Different kind of shots, but the result is a good one. That's much better. Run out opportunity, direct hit. Mahesh Sakarkar could not grab it in the first attempt. Musaf challenges are losing the plot in the fielding. Raju should have been heading back to the dressing room in the first over itself when the catch was dropped and spilled out for 6 runs. Well bowled, well bowled. That was not in the slot. That was slightly back. He's bowling from over the wicket. So if he cuts it sharply, he'll that angle. If the ball doesn't land in the slots, it's going to be difficult. Another play in a miss here from Raju Dabolkar. Good over here from Samir. You need to finish well. One good ball will keep things in much control. Well bowled, excellently bowled here. Off the legs, appeal half-hearted from Mahesh Sakarkar, but a good finish here from Samir. 2 overs gone is 32 without loss. TOURNMNT strikers. Nilesh comes into the bowling attack. Mid on. So Nilesh coming up from Fatoda. Too short here, too slow. Can't bowl this length. You can't bowl this shorter length, and that's been hooked away magnificently by Ram Nagwekar. Somewhere around 70 is not the best total to on this surface, on this ground. Another one. This was Fuller straight in the slot and straight out of the park. Not too short, not too full. If you look at the two shots, the one that was pulled away was short. He was on the back foot and he transferred the weight and pulled it away for 6. Next one was right in the slot. It was played down the ground. Easy it was. And this was also in the slot. Raju Dabolkar, there is hardly any chance, any margin of error here against Raju Dabolkar. He is powerful as well as super striker. Great timing from Raju. They are in fact now running towards a target, marching towards a target. This is off the back foot. This is also hit off the back foot. This is another one. They don't have that much of pace, Nilesh, here to trouble Raju Dabolkar. This is one of the most difficult shots to execute in tennis ball cricket, and that is the talent, that is the prowess of Raju Dabolkar. What an execution.
This was a single there, but 4 sixes and 2 singles coming off this over. 26 runs conceded by Nilesh. And I think this match almost we are heading towards a result. 58 without loss, 58 run opening stand, and just another 12 runs needed in the 12 balls, which is not a difficult to ask. Both the batters, Musaf challengers, are even yet to pick up a wicket here. Looking like the way Raju Dabholkar is batting, he's all pumped up, he's all fired up, lit up the spark because he was slightly expensive in bowling. And that should finish that off. What a batting performance here. Absolutely brutal and dominating performance. No answers from any of the bowlers, right from Mahesh Sakarkar and up till the end, Taraj. All have been hammered and hit for plenty of sixes. Absolutely one-sided affair, one-sided dominant performance. And it is Panem Strikers who clinch the first victory in this competition. Darsaka Stars versus Rising Punda. Your match up next. Match begin at grounder. एक दोन मॅचेस धावपाक जाय आमकांय बरें The match goes to Rajendra Dabholkar. Undoubtedly, it was such a top performance with the bat. He started against Mahesh Sakarkar right from the word go, got him 3 sixes and then kept on going, never looked back. And no answers to this batting masterclass from Rajendra Dabholkar. And to present this award, we'd like to call in the presentation ceremony Mr. TOURNMNT Uzgaonkar, who is also a well-known businessman here in the Ponda region, and also the sponsors, prime sponsor of this Masters Cup. So TOURNMNT is requested to kindly come
And first of all, I request Raju. Raju is walking and coming in towards the presentation arena. What a performance there from Raju. It was absolutely lightning, and it glowed the spark on everyone's faces when Raju is seen on such a dominant performance and force to reckon with. Now we are heading to the next match. Meanwhile, there will be change in the commentary. Our senior most Hindi commentator and a popular face, Ashok Naik sir, has arrived here in the arena. So we welcome Ashok sir, and I'll hand over the mic in his hand for further updates in Hindi. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद. तो आरामात 1 ओव्हर पॉवर प्ले 5 बॉलर टॉस कोण जिंकलो? दाडसकर. कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहली गेंद लेकर पावर प्ले का पहला ओवर पिच गया, लेफ्ट हैंड शॉट डीप मिड विकेट और लगभग डीप स्क्वायर लेके बीच में गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. हुई 4 रन के लिए. बाजी पर जो पिछला शॉट बहुत ही खूबसूरत शॉट था, जगह बनाए और बैकफुट पर कट करके स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर. ओवर पिच गेंद फॉलो कर मिड विकेट पर उड़ाया, गेंद हवा में. फील्डर बहुत अच्छी कोशिश जरूर रही थी लेकिन बहुत दूर का मामला था. गेंद मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर. 6 रन के लिए. से बाहर थोड़े से महंगे साबित हुए अपने पावर प्ले में पहले ओवर में, और बहुत ही अच्छी शुरुआत सामने. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी को मौका मिला राइजिंग फोंडा क्रिकेट टीम को, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बिना किसी नुकसान से.
साथ 22 पर कूद के व्यक्तिगत 3 छक्के 1 चौका लगाते हुए विल्सन बल्लेबाजी करते हुए, और अब विकेट आ चुके हैं सामने जो सामना करेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली। पावर प्ले था पहला ओवर जो समाप्त हुआ, अब दूसरा ओवर शुरू होता हुआ। जनार्दन आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, जनार्दन गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन के एक जोरदार अपील अंपायर की और आउटसाइड अंपायर, आउटसाइड अंपायर। लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी, और जब तक गेंद सिली मिड ऑफ पर फील्ड होती है, एक सिंगल को पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 24 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। बहुत ही खूबसूरत मैदान, आउटफील्ड पर ग्रास है। क्रिकेट का मजा कुछ अलग है इस मैदान पर, बहुत ही अच्छा मैदान। बहुत अच्छी गेंद, हल्के से मोड़ा गेंद को कलाई का उपयोग करके फील्डर बहुत दूर है, जब तक आते स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक बड़ी सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 25 पर पहुंचा, दूसरा ओवर जारी है। जनार्दन गेंदबाजी कर रहे हैं सामने, जो कि स्ट्राइक एंड पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए विकी। धीमी फेंकी गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, लेकिन लाइन पर भटके, नेक्स्ट स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। सफलता की तलाश जरूर है, थोड़ा सा पहला ओवर जरूर महंगा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी लाइन पर गेंदबाजी दिखाई देती हुई मैदान पर। ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट पर, और जब तक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। मास्टर्स लीग 2025 आज दूसरा दिन, सुबह के 17 बजे तीसरा मुकाबला चलता हुआ। कल बहुत ही शानदार रोमांचकारी क्रिकेट देखने को मिला इस मैदान पर। धीमे फेंकी गेंद, उड़ाया मिड विकेट पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। स्कोर 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 रन बिना किसी नुकसान से। ओवर पिच गेंद, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद फील्डर के हाथों में, और लगभग सफलता की तलाश थी, विकेट की तलाश थी, और वो कामयाबी हासिल होती हुए मैदान पर। पहला विकेट एक बहुत ही अच्छी पारी, जो कि आक्रामक शुरुआत की थी, शुरू में बल्लेबाजी में जो कि 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 29 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, और पहला विकेट मैदान पर वापस। और देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज जब तक आते मैदान पर, बहुत ही शानदार डीजे हमारे साथ जुड़ चुके हुए। कट किया इस बार गेंद को हवा में, थोड़ा सा कवर पॉइंट बाउंड्री पर, और इस बार फील्डर धोखा खा गए। बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से थोड़ी जो अगर कोशिश करते तो कैच के लिए मौका बन भी सकता था, लेकिन ये अगर मगर की बात थी। मैदान पर आते आते चौका जड़ गया, और चौके के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए खेल इसी बीच समाप्त हुआ दूसरे ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, सर्वेश नाइक आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। ऑप्टम से बाहर गेंद, इस बार बल्ले को हटाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 38-38। अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर, लगभग वाइड इस गली पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। खाते में 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर। थोड़ा सा अनियमित बाउंस है विकेट पर, गुडले स्पॉट पर गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाज भी अचंभित हो गए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। सर्वेश नाइक एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं था, फील्डर बहुत दूर था और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। शुरुआत फिर से अल्टी पल्टी वाला, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पॉइंट के बीच में जो शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर उनके ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील अंपायर की और लेकिन उस अपील को नकारते हुए खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52, 1 विकेट पर 52 रन 1। में कमेंट्री बॉक्स में एक बिल्कुल नई आवाज आने वाले बिल्कुल सालों में ये आवाज जरूर गूंजती रहेगी। और गेंदबाजी में परिवर्तन, रूपेश आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। तो हम वसीम की बात कर रहे थे कल के दिन में और उन्हीं के साथ बिल्कुल एक जानी पहचानी आवाज भाई साहब गोवा सर हरीश काकोडकर। तो इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर, डीप पर, फील्डर आते जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। रुपेश का स्वागत सिंगल के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद इस बार, लेकिन जो शायद बल्लेबाज को उम्मीद थी वो शॉट वो नहीं लगा। और जब तक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल और पूरा करने का। तो इस बार पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते खड़े खड़े बिल्कुल, लेकिन गेंद थोड़ी सी बल्ले से ऊपर से चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
फिर से लगातार थोड़ा सा परेशान निश्चित रूप से करते हुए, और सामने एक अच्छे ओवर की बिल्कुल तलाश है धाटसाकर स्टार्स क्रिकेट टीम को, क्योंकि शुरू में पहला ओवर पावर प्ले में थोड़ा महंगा रहा, बाद में थोड़ा सा कमबैक किया जनार्दन ने, फिर से थोड़ा सा महंगा ओवर, और ये ओवर चलता हुआ चौथा ओवर, और रुपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। फिर से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छी लाइन पर फुलर लेन की गेंद, और गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये मिस टाइम शॉट, मौका बनेगा, देखना होगा। ओ बिल्कुल थोड़ा सा फिसल गए जमीन पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बहुत ही अच्छा ओवर मैं जरूर कहूंगा, एक मौका बना था इस गेंद पर, लेकिन ठीक से अंदाज नहीं लगा। थोड़ा सा बारिश भी कही बिल्कुल जो कि पिछले 7-8 दिनों से तेज है, तो आउटफील्ड पर थोड़ा सा जो कि नमी है, और उसी की बदौलत जो कि थोड़ा सा फिसल गए, और जब तक गेंद को उठाते तब तक 2 रन बने। एक अच्छा ओवर, सफलता नहीं मिली, लेकिन रनों पर रोक लगा दी। 4 रन बने इस ओवर में, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 56, 56 रन 1 विकेट पर। शानदार डीजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीजे आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज ग्रुप ए का मुकाबला हो रहा है मैदान पर, जो कि आज का मुकाबला चलता हुआ तीसरा आने वाला मैच होगा, वो होगा रोहित स्पोर्ट्स और उन्हीं के साथ मुसाफ चैलेंजर्स। मुसाफ चैलेंजर्स और रोहित स्पोर्ट्स आने वाला मैच होगा आपके बीच का। गेंदबाजी में परिवर्तन, सत्येंद्र आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। अड़े बल्ले से ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6। दो चौके अब तक, 2 छक्के विकी के। अल्टी पल्टी की कोशिश, पुलर लेन की गेंद, एक डॉट गेंद, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर गोविंद प्रभु उर्फ बाप्पा, और अपने बॉलिंग बार पर फिर की गेंदबाजी कर रहे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अगली गेंद लेकर सत्येंद्र, छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट पर, एक हवाई फायर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। बड़ा मौका मिला हाथ खोलने का। ये बहुत अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज को बीट करते हुए थोड़ा सा विकेट कीपर के हाथों से गेंद निकली जरूर थी, लेकिन स्लिप पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सत्येंद्र लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार ऑन साइड पर गेंद स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर से फिर से थोड़ी सी दूर, कोशिश बहुत अच्छी की थी, गेंद को रोका, पहला रन पूरा किया, हाना कर रहे थे, दूसरे रन के लिए निकले, हल्के से अंपायर के और विकेट कीपर ने नजर डाली, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज सुरक्षित 2 रन बनाते हुए अपने स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा, 70 पर पहुंचा टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही अच्छा मैदान, और इस मैदान पर चलती हुई प्रतियोगिता मास्टर लीग्स 2025 आज दूसरा दिन, एक ग्रुप। इस बार एक गगनचुंबी शॉट, और गेंद एक बार फिर से निकलती हुई, दूसरा धक्का लगता हुआ, लेकिन
स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा टोटल मैं जरूर कहूंगा, जो कि 5 ओवर का मुकाबला है। आउटफील्ड बहुत ही अच्छा है, विकेट अच्छा है, और इस आउटफील्ड पर 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बना चुके हैं। जो पहले बल्लेबाजी को मौका मिला राइजिंग फोंडा क्रिकेट टीम को, उन्होंने बनाए 70 रन टोटल, 2 विकेट पर। 71 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। विकी ने शानदार बल्लेबाजी की, 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 15 गेंदों लगभग जो कि सामना किया, 30 रन पर खुद के व्यक्तिगत। उससे पहले शुरुआत बहुत अच्छी की थी विल्सन ने, जिन्होंने बनाए थे जो कि 4 छक्के लगाकर 9 गेंदों का सामना कर 1 चौके की बदौलत 29 रन। यह था लेखा जोखा। एक बार फिर से हम कॉल करेंगे आने वाले मैच के लिए रोहित स्पोर्ट्स और मुसाब चैलेंजर्स। एक छोटा सा ब्रेक, 72 का टारगेट, और तब तक ले चलते हैं हमारे डीजे के साथ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का, और उसी के साथ जो दर्शक जुड़ चुके लाइव प्रसारण के साथ, बहुत ही शानदार लाइव प्रसारण हो रहा है इस प्रतियोगिता का। लाइव एड्स इवेंट्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए ओपनिंग जोड़ी आइए प्लीज जल्द से जल्द। और जो दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, लाइव प्रसारण देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप सभी का एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। आने वाले मुकाबले के हम कॉल कर रहे हैं, एक बार आइए प्लीज। कैप्टन मुसाफ चैलेंजर्स और रोहित स्पोर्ट्स अगला मुकाबला होगा। प्लीज दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से। और इसी बीच एक बार फिर से मैदान पर जुड़ जाते हैं। 72 का टारगेट सामने, 5 ओवर का मुकाबला, और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। टीम के विकेट कीपर बैटर गोविंद प्रभु वो आ चुके, और उन्हीं के साथ सोमेश्वर हड़पैकर, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। 5 ओवर 5 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले का। सामने बहुत अच्छी जो कि शुरुआत की थी विल्सन ने, विल्सन के बाद विकी जो थोड़ा सा शांत क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आखिर में बड़े बड़े शॉट लगाए, लंबे लंबे छक्के लगाए, और एक सम्मानजनक टोटल खड़ा कर दिया। लेकिन विकेट बहुत अच्छा है, आउटफील्ड बहुत अच्छा है, और देखना होगा फिलहाल इस 72 को टोटल को किस तरह से सामना मुकाबला करते हैं मैदान पर धाड़ सकल स्टार्स क्रिकेट टीम। आने वाले मैच के लिए दोस्तों आइए प्लीज एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं रोहित स्पोर्ट्स और मुसाब चैलेंजर्स। राम उर्फ लल्ला यादव दिखा देते हुए आपका स्वागत है। लल्ला यादव एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक क्रिकेट का लंबा सफर खेल चुके हैं, और उनका आगमन हो रहा है मेरे ख्याल से। स्वागत है लल्ला आपका कमेंट्री बॉक्स में से। तो चलिए खेल के एक बार फिर से शुरुआत मैदान पर, जो कि होती हुई 72 का टारगेट है। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर, और सामने ओपनिंग जोड़ी में आ चुके स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए जो कि गोविंद प्रभु, और उनका साथ देते हुए सोमेश्वर, और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए सर नमस्कार। बोली चषक बॉलर कोण लागतोय तो मनोज चेंजेस आले पाहिजे
और पहला ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर मनोज, अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहले ओवर की पहली गेंद। और बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छा यार्कर पहली गेंद पर चलता किया, बोल्ड किया, पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई मनोज को। डीजे टूर्नामेंट के साथ 3 अंपायर जुड़ चुके हैं, सर नरेश पारसेकर, सर सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ सर पुण्य पालकर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ क्रिकेट का बिल्कुल ढेर सारा अनुभव जो स्कोरिंग की जानकारी देते हुए उमेश आसगांवकर, जिन्हें बिल्कुल हम बड़े पैर के साथ भाऊ कहते हैं, और कमेंट्री बॉक्स में कल जुड़ चुके थे। एक बेहतरीन, हम अब बात कर रहे थे युवा आवाज की, आने वाले समय में जरूर आवाज वो आपको सुनाई देंगे वासिम की, और उन्हीं के साथ वही सब गोवा हरीश काकोड़कर सर। मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों थोड़ी सी गुस्ताखी माफी जो थोड़ा सा देरी से पहुंचा इस मैदान पर। और तीसरा मैच और सामने खेला मेरा पर फील्डर और बॉल बॉयज के साथ जुड़ चुके हैं आकाश उर्फ डंबा, दो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बिल्कुल दिखाई देते हुए। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में मनोज, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने नए बल्लेबाज सर्वेश। आगे निकलकर गेंद को उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। पहली गेंद पर सफलता, लेकिन कहीं न कहीं 72 का सामने लक्ष्य है तो आपको आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और वही दिखाई देते हुए मैदान पर एक बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। इस बार धीमी फेंकी गेंद सफल होकर स्टंप को कवर किया, और इस बार बैकवर्ड्स कर लेग पर और एक नजाकत भरा शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। पर सफलता, लेकिन बाद में जो 2 बड़े शॉट चाहिए थे। इस बार पुलर लेन के गेंद रन के लिए निकले, आगे निकलकर इस बार, और देखते देखते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाइज का इशारा और लेग बाइज के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कप्तान बल्लेबाजी करते हुए सर्वेश, और सर्वेश का साथ देते हुए सोमेश्वर। मनोज अपने बॉलिंग मार्ग पर एक छोटा रनअप 7-8 कदमों का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। आगे निकलकर खेला गेंद हवा में, 2 फील्डर, ओहो हो, बिल्कुल जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर परशुराम कैच को पकड़ते हुए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें होनी चाहिए थी आपस के बीच में, थोड़ा सा टकराव का भी संभव था, और जब ऐसा छोटा सा जो कि टकराव होता है तो गेंद भी कैच भी हाथों से दूर हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी जजमेंट, निगाहें जमा कर रखे, और दूसरा धक्का लगता हुआ टीम को। दो बड़े शॉट लग चुके थे मेरे ख्याल से, पहली गेंद पर विकेट, बाद में 2 शॉट की जरूरत थी, वो लग चुके थे, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल से जल्दबाजी हुई और वहीं पर अपना विकेट खो बैठे। दूसरा विकेट चला गया टीम का, और नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, और एक बहुत ही
लंबा सफर क्रिकेट का रुकी ने आ चुके हैं मैदान पर। रुकी पेडनेकर जो आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है और गेंदबाजी में ऑफ स्टंप पर ये छोड़ा, जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा जो कि मैं कहूंगा वार्म अप की गेंद जरूर लाइन से भटके, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। परशुराम गेंदबाजी करते हुए अपने लंबे रनअप के साथ, फुलटॉस गेंद, थोड़ा सा हवा में शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर से बहुत दूर गेंद और गेंद चली गई 4 रन के लिए। 2 बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया, यानी टोटल मिले 5 रन स्कोर के खाते में। अंपायर का और एक मौका आ चुका है बड़े शॉट के लिए, देखना होगा फ्री हिट पर क्या होता है। आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, छोड़ा, जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, एक वाइड यॉर्कर की कोशिश, गेंदबाज की बिल्कुल अच्छी सोच, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर से लाइन पर भटके और एक बार फिर से अंपायर इशारा करते हुए फ्री हिट का और एक सिंगल बढ़ गया, फिर से एक बार जो कि मुकाबला जारी है और आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, परशुराम अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर सिक्सर, 6 रन के लिए। मौका बना और मौके पर बड़ा शॉट लगाया डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने मिले 6 रन स्कोर के खाते में। बैकफुट पर खेलना चाहते थे और इस बार थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 22 का इशारा अंपायर का और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। डीजे स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा, 71 रनों का टारगेट है 71 का। छोटी गेंद पुल किया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई बिल्कुल हमारे साइड स्क्रीन के ऊपर, सी मार्का से बाहर। लेकिन पहले ओवर में 2 बड़े शॉट, 2 धक्के भी लगे, 2 विकेट भी खोए, लेकिन इस ओवर में रन बन रहे मैदान पर। अच्छा शॉट कारपेट के साथ, इस बार कवर पॉइंट की तरफ लंबी दौड़ लगानी पड़ी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से निकले, गेंद को जब तक उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रन बड़ी तेजी के साथ पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद सिंगल बनाया जो कि डबल बनाया बल्लेबाज ने और इन 2 रन के साथ स्कोर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ 38 पर पहुंचा, 38 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार कट किया गेंद को और जब तक एक्स्ट्रा कवर से जाते, मिड ऑफ पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सोमेश्वर जो कि उनके बाद मैदान पर आ चुके हैं, सर्वेश और गोविंद। पीछा किया था इस बार ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी खड़े खड़े बिल्कुल बल्ला घुमाया था रुकीनी ने और गेंद उनको बेट करते हुए गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 39, 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
अल्टीपल्टी वाला शॉट, बहुत ही लाजवाब स्ट्रेट हिट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब चौका। स्वागत किया विनोद विल्सन का 4 रन के साथ बल्लेबाज ने। सर्वेश नाइक स्ट्राइक पर बहुत ही लाजवाब शॉट लगाते हुए इस बार सफल होकर उड़ाया स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई और एक बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। और से आगे निकलकर गेंद को लोअर फुल टॉस लगभग और थोड़ी सी हड़बड़ाहट, मिडा लॉन्ग बाउंड्री पर पहला रन, दूसरे के लिए थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर इनसे सर्वेश ने मना किया। सही फैसला, रनआउट का खतरा लगभग बन सकता था मैदान पर और विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने बैटर रहे रुकिनी। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड नहीं करते। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सामने सर्वेश नाइक बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे और रुकिनी की अच्छी सोच, सिंगल बनाकर बिल्कुल उनको ज्यादा मौका दे रहे बल्लेबाज के लिए। ऑफ साइड पर एक गली पर एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। अच्छा शॉट, फिर से एक बार कारपेट के साथ गैप में गेंद, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर थोड़ा सा मैदान पर क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी देखने को मिला और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। फिर से एक बार बहुत अच्छा तालमेल विकेटों के बीच में और 2 रन देखते देखते पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। शुरुआत बहुत अच्छी रही थी पहली गेंद पर गोविंद प्रभु, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक मौका जो कहीं ना कहीं सता रहा है मैदान पर। फिर से अच्छा शॉट, बिल्कुल बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 57 टोटल स्कोर 57। लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए टोटल 5 ओवर में 71 यानी 71 रनों का। अब खेल बच चुका है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 14 रन। पहली गेंद छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। बाउंड्री पर बिल्कुल देखना होगा गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन सिंगल पूरा किया, माफ कीजिए, दोनों बल्लेबाजों ने। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सर्वेश नाइक के खुद के व्यक्तिगत 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही कप्तानी बल्लेबाजी। लगभग संकट शुरू हो चुका था, पहली गेंद पर विकेट निकली थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बल्लेबाजी।
धीमी फेंकी गेंद, इस बार बिल्कुल बल्लेबाज को बीट किया, लेग कटर, लेग ब्रेक, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और विकेट चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ी सी देरी हो गई मैदान पर, मैं कहूंगा इस विकेट के साथ। सर्वेश नाइक आउट होकर वापस नए बल्लेबाज आ रहे मैदान पर, लेकिन तब तक एक बार फिर से सुनते हैं हमारे डीजे के साथ। हमारे स्कोरर सर उमेश माऊ आसगांवकर हमारी पूरी जानकारी देते हुए, कल एक 50 बन चुके थे और वो थे पुनाजी कालंगुटकर। अब टर्म से बाहर कट गया, इस बार कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और इस शॉट के साथ, विनिंग शॉट के साथ इस मैच को समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक अच्छा टोटल था, 70-71 का टारगेट था, लेकिन सामने मैं कहूंगा कप्तानी की बल्लेबाजी सर्वेश नाइक ने बहुत ही शानदार दूसरा अर्धशतक इस जो कि प्रतियोगिता का मास्टर्स लीग का। और आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए बिल्कुल वही नाम, सर्वेश नाइक, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी उनको दी जाएगी। सर तन्मय उसगांवकर जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी आपके साथ दी जाएंगी। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी, लगभग शुरू में पहली गेंद पर विकेट, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिल्कुल बीच में मौका निकला था कवर पर, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में, लेकिन क्रिकेट है, ये होता रहता है मैदान पर। तो दूसरा मुकाबला, लेकिन उससे पहले आइए प्लीज सर्वेश नाइक मैन ऑफ द मैच के लिए। और अब मुकाबला और मुसाब चैलेंजर्स, इन दोनों के बीच में चौथा मुकाबला आज के दूसरे दिन का एक ग्रुप जो कि खेल रहा है और देखना होगा। फिलहाल एक बार फिर से जुड़ जाते हैं सर हरीश काकोडकर के साथ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कॉल कर रहे सर्वेश नाइक, आइए प्लीज, मैन ऑफ द मैच आपके लिए ट्रॉफी बिल्कुल इंतजार कर रही है। तो Sanand Mandrekar beginning a great start. Good delivery here. Very good execution. Perfect wide Yorker.
Musab Challengers versus Rohit Sports. Both have lost their first encounter. So this win is a crucial victory here. They need to win to keep them in the race. Much better bowling. I think he's targeting the wideish Yorker line, and not a bad idea. If at all Anand Mandarekar wants to go, he has to slice the ball, he has to drive the ball off the back foot or the front foot and get a boundary. This one's once again wide, but I think the plan that is working in the minds of Lokesh understands that there is no margin for error here on this wicket. If you bowl short, the batters hook you, pull you. If you bowl full, the batters just three for the loss of one, looking for a wide, well bowled. New batter comes in. Another one, well bowled, young fast bowler, and the batter is pleading for a wide, but absolutely perfect delivery. I think Lalla and entire team must have come in a huddle. They must have definitely discussions about how to go, because once you see this is a flat deck, batters are dispatching the ball over the fence, so you need to be really smart and cunning. Excellent once again, outside edge and just short of the third man. Very well thought, very well planned, very well executed over so far. Although he has conceded 3 wide balls, but I don't think so. If you concede 3 sixes, better than you concede 3 wide balls, and go with the same plan, the same mindset of bowling a wideish Yorker. This might be another one, but just going over the top of the fielder there. Might be getting another couple. Run out opportunity, good throw from the deep, but 2 successfully completed here by the batters. But an excellent over. I must give credit to Lokesh for thinking and executing his plan perfectly. And is 6 for the loss of 1 at the end of 1. Samir coming into ball. Oh, and he gets it. Shuffled across too much and exposed his leg stump. Perfect targeting of the stumps here. And set 2 down. Worst possible start here for Musab Challengers. They're 6 for 2.
In comes Mahesh Sakarkar. Going for the switch and finding the fruitful return. Excellent execution. Slightly back of length. I think the fielder, maybe they are discussing, should have been little finer, but he gets the boundary. 10 for 2. Lovely execution. Beautiful cover drive here from Malinga. He's showing the skills with the bat. He missed out on the previous occasion, but he knows his team is in trouble, and whenever the team is in trouble, he rises on the occasion. Once again, looking for a switch hit. This time bowler saw the plan and targeted the fuller length. This is in the air, getting the leading edge and just going to get a single. Play and a miss. Once again, slower leg cutter. Two wonderfully bowled over here from the bowlers of Rohit Sports. At this stage, Musab challengers are way far down compared to what we have witnessed this entire competition. It's 15 for 2 at the end of 2. Heaved away and charging towards the ball. That's nice fielding. That's experience coming at the front. Knowing that if I stay back, then ball might bounce a little bit more and might go over the top. He's not a tall fielder, so charging towards the ball was the perfect way of executing this fielding approach. Lalla was very expensive. Considered too many runs, but now he doesn't have that many strong batters as we saw with Wilson or maybe Vicky Karapurkar. This is India, easy chance, and Lalla into the wickets column. Musab challengers are losing the plot. Sajjat also hits back. Nothing much posted on the board so far. Is 16 for 3.
At the moment, things are going very calm. What a wonderful piece of fielding. Brilliant. That was close to the boundary. Stopping. This shows where the game is heading. This shows where the momentum is. It's entirely spirited game at the moment. Rohit Sports understands that we are at the moment dominant team. We are at the moment doing very good job in terms of fielding, in terms of bowling, executing our plans. What a shot, what a shot. Waited, pause and give it a full thumb. Dispatched over the covers boundary for a humongous strike. And another one, back-to-back sixes here. Oh, in fact, taken. This is shocked everyone. I think it's because of the wind maybe at the top. The ball has not traveled. They are in shock. Samir can't believe that it has not traveled for six. Everyone here thought it's going for six, but maybe it has got height, elevation, not the distance. Very well judged catch, I must say. Apart from the fielder, everyone thought it's a six. And it's all about Rohit Sports in this game. Musab challengers are losing the wickets in regular succession. Nobody is playing a strong innings or any partnership between any two batters. They are losing the plot quickly. Only hope is Mahesh Sakarkar. And that's another one. It's the same way. It's a repeat of his dismissals in the past game. Going back inside edge to the keeper. No mistake once again from Lalla. And Ashok Bin, who has been very, very impressive, I must say, with his bowling performances. He has been brought as a super sub in the previous game, got a couple of wickets, and once again he gets rid of another one. Half the side back to the pavilion is 24 for 5. High in the air, they have taken most of the catches. Oh, that could have been dangerous there. That could have been head-on collision. There was no calling between both these batters. I remember an incident in a leather ball cricket where there were a couple of collisions that was a dangerous injury to the players on the field. Very difficult to recover the head injuries, and everything in the end just ended up very smoothly. Dispatched. That was a slot ball here from the bowler.
This is a classy shot on one knees. Nothing wrong with the ball. Absolutely nothing wrong. He's trying to bowl a leg cutter, but what a shot this is. Just gorgeous, as you can call in tennis ball cricket or in cricket. Pritesh just giving a ray of hope here. 39. Going for once again another one. Is timing the ball well, putting the gap, but getting a couple of runs. Looked good here in this innings. No trouble whatsoever with his timing. Some shots were out of the blues. Difficult for even the bowler to think what I've done wrong over there, especially the previous one which went for 6. 41 and make that an extra 42. They should at least be competitive with, they need to get 60 runs. Nothing less than 60 will be competitive on this wicket. If you get early wickets, 2-3, just like Maisa Kalkar bowls a good spell, then you got a chance. Single run. That is going to mark the end of over number 4. It's 43 for the loss of 5. So Raghoba coming in the bowling attack. Single, looking to keep the strike. Actually, yes, definitely the way he has batted, they wanted him to keep the strike for the last 5 balls. Down the leg side, might be getting that important single. Important is their best batter will come on strike in this game. Wide, couple of runs added. Important part is Pritesh coming on strike. They need him to be on strike for the next all 5 deliveries if they need to get a good total of somewhere around close to 60. 46. Left all alone. That's 5. That's 5 freebies here. 5 freebies given by the bowler himself bowling a wideish line and the keeper missing it to collect. It's almost like 20% a free on an item. He's giving the freebies at the moment. No election time here. This should be, no, that's a falling short of the bowler himself. Just going to get a single. He's got good, decent enough action and good pace. Just that he's ill-directed few deliveries that considered few runs. 53. That 5 wides was a bonus. Yes, lovely shot here. Off the back foot, punching it over the extra cover region. A classic shot, getting the boundary for him and the team. They are moving towards that 6.
Wow, that's good one. That is marvelous hit. That will get them over that 60 run mark. Expensive over coming here for another one try. This might be a catch chance. Might be looking. The ball is turning. Is still looking, searching for the ball. They might be going for turning around the third run. And Pritesh will be on strike of the last ball. But I think the job is done. Pritesh will be on strike. Run out at the non-strikers end. 65 for the loss of 6. Yes, they were 24 for 5, almost around 3 overs, and now they will be happy and pleased to see 65 on the board. With one hit, they will reach 70. And play and a miss. So they will remain stuck on 65, but I think they will be happy. Having been on 24 for the loss of 5 wickets, no one would have thought they would have gone past 60, but they reached the 65, and there will be some positivity coming when they are coming on to field, because they will be pumped up by that spirited performance from the lower orders, especially from the bat of Pritesh and a handy knock from Dattaraj. Around 65 runs and 66 is the target. Requesting Musab challenges. Meanwhile, I'll call out the next captains. Rising Ponda. In fact, pair name strikers and Darsaka stars. Pair name strikers and Darsaka stars. You are requested to come for the toss fast. और आइए प्लीज टॉस के लिए प्लीज आइए पेडने स्ट्राइकर्स और दाड़ साकर स्टार्स आने वाला मैच होगा आप दोनों के बीच का तो कप्तान से रिक्वेस्ट है आइए प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए दाड़ साकर स्टार्स और पेडने स्ट्राइकर्स जो आने वाला मैच होगा और उससे पहले अब एक बार फिर से इस मैच के साथ जुड़ जाते हैं मुसाफ चैलेंजर्स और रोहित स्पोर्ट्स के बीच में ये चलता हुआ मैच एक अच्छा टोटल निश्चित रूप से जबकि एक नाजुक हालात में थी 24 पर 5 विकेट खो चुकी थी एक कैच छूटा कैच के बाद बिल्कुल 2 बड़े शॉट लगे वाइड बॉल के साथ 5 रन मिल गए बाउंड्री लाइन पर थर्ड मैन बाउंड्री पर और एक सम्मानजनक टोटल जो शुरू में बिल्कुल नाजुक हालात से मैं कहूंगा एक अच्छा टोटल अब खड़ा कर चुके हैं बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर टोटल 65 रन और 66 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए और ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं टीम के मैदान पर ओपनिंग जोड़ी के साथ और उन्हीं के साथ बल्लेबाजी के लिए समीर
पावर प्ले का पहला ओवर लेकर महेश साकलकर गेंदबाजी के लिए उनके सामने बैटर है राम उर्फ लल्ला यादव और उन्हीं के साथ समीर। ये ओपनिंग जोड़ी 66 का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए। और पहली गेंद अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। अड़े बल्ले से खेला इस बार शॉर्ट आर्म बॉल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई। पहली गेंद पर बड़ा आगाज, लल्ला यादव के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन। अच्छी गेंद इस बार हल्के से खेला, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। और जब तक लॉन्ग ऑफ से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर समीर ठाकुर दिखाई देते हुए फील्डिंग के साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक अच्छे ऑलराउंडर टीम के। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल अतिरिक्त बढ़ गया स्कोर के खाते में। 66 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। फिर से थोड़ी सी परेशानी, ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। ये मिस टाइम शॉट और मिड ऑन पर बिल्कुल आराम के साथ उस कैच को तब्दील करते हुए पहला विकेट चला गया। आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में समीर आउट होकर वापस। तो समीर टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फील्डिंग का फैसला किया है पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने। सफलता मिलती हुई एक अच्छा कैच और लल्ला यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज संदीप कुर्डीकर न्यू बैटर। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, गैप में एक सिंगल और एक सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अपना खाता खोला इस एक रन के साथ, बहुत अच्छी फील्डिंग कवर पर, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और एक रन के साथ एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लेकिन बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिसफील्डिंग कवर पॉइंट पर और उसी का फायदा मिला। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं हुआ। स्लिप पर गेंद फील्ड होते हुए पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा था, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक महेश साकलकर का। बाद में विकेट भी लिया और रनों पर बिल्कुल रोक लगा दी। पहला ओवर जो पावर प्ले का वो समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर और सामने बल्लेबाज है राम उर्फ लल्ला यादव। फिर की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं समीर ठाकुर। फील्डिंग में भी अब परिवर्तन हो चुका है। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वेयर लेके एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। यह है बिल्कुल बाउंड लाइन की फील्डिंग। ऑफ साइड पर इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ, बल्ले का थोड़ा भीतरी किनारा लगा और टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। इस बार बिल्कुल अच्छा शॉट, फिर से जगह बनाई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे और बहुत अच्छी फील्डिंग, बैकअप बहुत अच्छा हो रहा था मैदान पर कवर पॉइंट बाउंड्री से। जब तक गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी उमेश सर जो कि ये इस टूर्नामेंट के साथ सभी खिलाड़ी जो कि 40+ के, लेकिन बिल्कुल स्लॉग से स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर लल्ला यादव के बल्ले से एक नजाकत भरा छक्का, 6 रन। अल्टी पल्टी की कोशिश लेकिन सफल नहीं रहे। बहुत अच्छी गेंद, एक बड़े शॉट के बाद कमबैक किया समीर ठाकुर ने और धीरे धीरे जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। और फिर से कोशिश, शायद खुला मैदान है, अच्छा मैदान है, आउटफील्ड अच्छा है। कहीं कहीं हमारे कमेंटेटर के मन में यह सवाल जरूर होता है पैदा जो कि, लेकिन बल्लेबाज की सोच अलग होती है। बहुत अच्छा शॉट इस बार, ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन पर, बेहतरीन फील्डिंग। देखो हम 40+ की बात कर रहे थे लेकिन ये युवा खिलाड़ी की तरफ बिल्कुल फील्डिंग देखने को मिली। बहुत पीछा किया गेंद को, आकर बिल्कुल झपटे, गेंद को उठाया, उससे एक्शन में गेंद को थ्रो किया और जब तक बैकअप होता है एक सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला। टोटल पहुंचा जो कि 20 पर पहुंचा टोटल स्कोर। और 2 ओवर के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। अशरफ आ चुके गेंदबाजी के लिए, खुद का पहला टीम का तीसरा। 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर के बाद टोटल जो कि पहुंचा है 20 पर। इस बार लेग स्टंप पर एक बैठक शॉट स्वीप किया लल्ला यादव और गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद सीमारकों को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का और कई दर्शक लाइव एच के इवेंट्स के साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं में से वेदांग पारसेकर, गौरव पारसेकर, समीर पारसेकर, अमर देसाई जुड़ चुके हैं जो कि इस टूर्नामेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के साथ ऑप्टम से बाहर और पूरे भारत भर से ही नहीं तो भारत से बाहर से भी दुबई से इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं कपिल वाड़िया सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप वहीं से मैच को इस आनंद ले रहे, कमेंट्री बॉक्स में से आपका बहुत बहुत थैंक यू इस टूर्नामेंट के साथ। बिल्कुल एक अच्छे स्कोरर है और वो मैच को देख रहे हैं।
छोटी गेंद, इस बार कट किया गेंद को हवा में, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। हमारे और एक स्कोरर कॉम्पिटेंट स्कोरर के साथ जाने बिल्कुल आपकी सराहना करनी पड़ेगी कमेंट्री बॉक्स में से। लल्ला यादव स्ट्राइक पर, सामने एक बार अशरफ अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद को लेकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर 29 टोटल। सफल होकर इस बार पुलर लेन की गेंद लगभग एक वाइड यॉर्कर, एक अच्छा कमबैक, अच्छी गेंद इस बार और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अनंत मांद्रेकर और एक बेहतरीन जो कि बल्लेबाज टीम के विकेट कीपर बैटर, और वो गेंद को वापस करते एक बार फिर से जो कि अपने बॉलिंग मार पर अशरफ इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए 29 टोटल स्कोर। छोड़ा, इस बार जाने दिया, अब तुमसे बाहर, वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल बढ़ गया, स्कोर आगे बढ़ा 30 पर पहुंचा टोटल। 36 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और धीरे धीरे अपने लंबे रनअप के साथ 15-16 कदमों के साथ अशरफ अपने बॉलिंग मार पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बहुत अच्छा कमबैक वाइड बॉल के साथ, उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन पर, ज्यादा मौका नहीं दिया लल्ला यादव को, कोशिश जरूर कर रहे, मालूम है थोड़ा सा रन रेट बढ़ रहा है लेकिन सामने दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे निकल कर गए ना हवा में, लेकिन मौका मेरे ख्याल से निश्चित रूप से नहीं था। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा पूर्वानुमान, मेरे ख्याल से अगर कैच के लिए आगे निकलते तो गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन को पार करते, लेकिन अनुभव है ढेर सारा समीर ठाकुर के साथ, उन्होंने बिल्कुल सोच लिया ये कैच नहीं बनेगा, फील्डिंग बात बिल्कुल सही होगी और वही हुआ। 3 रन अपने टीम के लिए मेरे ख्याल से निश्चित रूप से बचाए। अच्छा शॉट, बिल्कुल बेहतरीन ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और आउटफील्ड पर ग्रास है, ऐसे मैदान पर फील्डिंग की मजा बिल्कुल अलग होती है। बहुत अच्छी फील्डिंग और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। ओवर की समाप्ति हुई, खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 34 रन, 12 डिलीवरी, 34 रन। डीजे तीन ओवर में 24 रन, 12 गेंदों में बाद में 40 रन और अब रन रेट बढ़ चुका है। 12 गेंदों का खेल बाकी है और हर ओवर में 17 रन बनाने पड़ेंगे और गेंदबाजी में परिवर्तन, सखाराम आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। यह ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और सामने बैटर है संदीप। छोटी गेंद पुल किया, इस बार ऑन साइड पर, गैप में बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला समीर ठाकुर को, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। का खेल 30 रनों की आवश्यकता, छोड़ा, इस बार जाने दिया, अपने स्टंप्स को कवर किया, गेंद निकली विकेट के पर अनंत मांद्रेकर के हाथों में और बिल्कुल ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव है अंपायर के साथ। देखा शफल कहां पर हुए, कहां पर आ गए बल्लेबाज और वही बिल्कुल अच्छी जो कि निर्णय। अच्छा शॉट, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं मिला, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए।
का 17 रन प्रति ओवर के साथ और अगली गेंद इसी बीच अच्छा शॉट फिर से एक बार कारपेट के साथ ओ बहुत अच्छी फील्डिंग लगभग गेंद फंसा रही थी लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। फिर से थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन जो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर उसको आगे लाया 38 सर्कल के भीतर और डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक फील्डर को तैनात किया। एक स्लॉग स्वीप गेंद हवा में कैच का मौका मिड विकेट पर और बहुत अच्छा कैच उसी जगह पर मेरे ख्याल से कैच निकला था जो कि इस बार बहुत अच्छा कैच पकड़ा और लल्ला यादव वापस टीम को लगा और एक जोर का धक्का। लल्ला यादव के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर स्कोर हो चुका है 41 रन 41। अभी भी चाहिए 25 रन मैच को जीतने के लिए और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर सोनराज। शॉर्ट आर्म पोल छोटे गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए जब बिल्कुल जो कि समय था जो बड़े शॉट के लिए और वो बड़ा शॉट आते आते सोनराज के बल्ले से मैच को फिर से जीवित कर दिया। मिले 6 रन स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ अब मात्र स्कोर हो चुका है 47। लास्ट ओवर 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 19 रन। सामने अगर मैं बात करूंगा पहले जो कि 5 ओवर के आखिरी ओवर में जो 22 रन बने थे और अब बनाने हैं आखिरी ओवर में 19 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन लास्ट ओवर नीलेश फिर टॉस गेंद लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन पर सी मार्का से बाहर। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ओ ये मिस टाइम शॉट कैच का मौका। ओ इस बार प्लेटेड गेंद थी लेग ब्रेक गेंद थी बल्ले का होती हुई 4 गेंदों का खेल बाकी है अभी भी और 4 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 13 रन।
बैटर संदेश आ चुके हैं मैदान पर, संदेश पांडे। एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग बाउंड्री पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, सही पूर्वानुमान, हवा में गोता लगाया गेंद के बिल्कुल पीछे, और जो गेंद लगभग 4 रन के लिए निकल रही थी। मेरे ख्याल से इस मैच में अब ये दूसरा चौका बचाया इस फील्डर ने, एक पहले इससे कवर पॉइंट पर जो बिल्कुल एक सही पूर्वानुमान के साथ, और अभी अभी मेरे ख्याल से ये 6 रन बहुत जो कि काम आएंगे। समीर ठाकुर लॉन्ग ऑफ पर, इस बार फाइन लेग पर फील्डर, ओ बहुत अच्छी कोशिश रही थी विकेट कीपर की, और तब तक एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में, 1 रन बना स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 55 पर, 11 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए, और 2 गेंदों का खेल, दोनों गेंदों पर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, 2 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन। ओ बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, अंपायर की उंगली आसमान की ओर। शायद थोड़ी सी चर्चा हो रही थी कॉम बॉक्स में, पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा था इस गेंदबाजी पर, तब थोड़ी सी जो कि न्यू बैटर मैदान पर समीर धुरी, लास्ट बॉल और 11 रन। ओ फुलर लेन की गेंद, एक डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग बहुत अच्छी रही, और मैं कहूंगा नीचे तरफ से जो कि 3 ओवर के बाद 24 रन थे 5 विकेट पर, वहीं से लेकर जो अंतिम ओवर में 2 ओवर में 39 रन बने, वो बिल्कुल ठीक ठाक कर गए टीम के लिए। आखिरी ओवर में 22 रन बने, वो आखिरी ओवर भी बहुत महंगा साबित रहा, और समीर ठाकुर की शानदार जो कि फील्डिंग देखने को मिली। तो चर्चा हो रही थी पहली गेंद जो कि आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा जो कि गेंदबाजी रही, और वही नाम बिल्कुल मैन ऑफ द मैच के लिए। आइए नीलेश मैन ऑफ द मैच इस मैच के। और दर्शक स्टार्स इन दोनों टीमों के बीच में दे रहे हैं। आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए नीलेश सर
सैंडी स्पोर्ट्स ओनर, लेकिन उनको ज्यादा बंडे के नाम से जाना जाता है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, और आप ही के हाथों से मैन ऑफ द मैच की शानदार ट्रॉफी दी जा रही है। ले चलते एक बार फिर से अगले मैच के साथ पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए राजेंद्र उर्फ राजू दाभोलकर। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट टेक शॉट, थोड़ा सा हवा में, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो, बहुत ही शानदार थ्रो बाउंड्री लाइन से सीधे गेंदबाज के हाथों में। और थैंक यू बंडे सर एक बार फिर से आपका। और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुपेश वेलिप और उन्हीं के साथ सोमेश्वर हड़पैकर, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर। एक वाइड यॉर्कर पीछा किया था इस बार बल्लेबाज ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राजेंद्र दाभोलकर अगली गेंद लेकर पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच। इस बार छोड़ा थोड़ा सा लाइन पर बैठ के, ऑफ से बाहर, और अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा। सर पुण्य पालकर, सर नरेश पारसेकर और उन्हीं के साथ सर सदगिरी नाइक। ऑफ स्टंप पर फिर से थोड़ी परेशानी, ऑफ स्टंप से बाहर पीछा किया था बल्लेबाज रुपेश वेलिप ने, लेकिन ऑफ स्टंप से दूर थी गेंद। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में इस वाइड बॉल के साथ। स्टैक पर रुपेश वेलिप। ओवर पेज गेंद उड़ाया सामने, बिल्कुल इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई मौका नहीं, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और उस पर करारा। थोड़ा सा अपना रनअप पर वापस निकलते हुए अगली गेंद लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर सोमेश्वर हड़पैकर। और इस बार बाहरी किनारा, गेंद हवा में गली की तरफ, शायद कोशिश बहुत अच्छी की थी। मेरे ख्याल से आसान मौका नहीं था, हाफ चांसेस मैं जरूर कहूंगा, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की थी। डाइस लगाया था जमीन पर, अपने आप को बिल्कुल जो कि लेटा दिया था, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये कॉम्बिनेशन, ये जोड़ी मैदान पर। सोमेश्वर स्ट्राइक पर, थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे राजेंद्र दाभोलकर। इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर के सर के ऊपर से, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत अच्छी गेंद इस बार डीले हाथों से, लोअर फुल टॉस। राम नागवेकर आते, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया।
दो बड़े शॉट लगे, जो दो ओवर पिच गेंदें मिली वहीं पर दो बड़े शॉट लगे। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन। टोटल स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान से। बिल्कुल एक जानकारी, अगर हल्की बारिश भी शुरू हुई, बड़ी बारिश भी शुरू हुई तो खेल जारी रहेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए यह जानकारी, खेल दोस्तों जारी रहेगा। अगर बारिश शुरू हो गई तो भी यह मैच जो कि जारी रहेगा, लेकिन बिल्कुल संभावना नहीं है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नितेश गड़ेकर आ चुके हैं। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ, 15 रन टोटल स्कोर। ये गेंद विकेट कीपर से थोड़ी सी गेंद हाथों से दूर, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा था। गेंद को उठाते, फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा गति में परिवर्तन किया था, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, जल्दी खेल बैठे इस बार बल्लेबाज और गेंद चली गई इस बार स्लिप की तरफ। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। बल्ले का भीतरी किनारा, लेकिन राम नागवेकर बहुत ही चुस्तीले स्फूर्तिले फील्डिंग में हमेशा, जो कि और पूर्वानुमान सही बिल्कुल। गेंद को फील्ड किया और एक बार फिर से नीतीश अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये थोड़ा सा अनियमित बाउंस विकेट पर, एक इस बार गुडलेस स्पॉट पर थोड़ा सा गेंद ऊपर उठी और ऐसे गेंदें बल्लेबाज को हमेशा परेशान करती है, वो वही देखने को मिला। और धीरे धीरे एक बार फिर से नीतीश गड़ेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर सोमेश्वर, ओवर पिच गेंद इस बार उड़ाया और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच को तब्दील करते हुए सफलता मिलती हुई नीतीश गड़ेकर को। अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, थोड़ी सी जो कि पैरों पर गेंद लेग स्टंप पर जरूर थी और वो ताकत, वो टाइमिंग नहीं हुआ गेंद के और बल्ले के बीच में, और कैच का मौका बनते हुए विकेट चला गया। पर आउट होकर वापस सोमेश्वर हड़पैकर। पर और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, दूसरा अर्धशतक कल के दिन में पुनाजी कलंगुटकर का, आज के दिन में सर्वेश नाइक। और थोड़ी सी मैं कहूंगा कि टीम जरूर संकट में है। स्ट्राइक पर सामना करते हुए सफल होकर खेला इस बार फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। कप्तान है टीम के संकट मोचक बल्लेबाज, लेकिन नितेश गड़ेकर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मास्टर लीग 2025 कई दर्शक जुड़ चुके लाइव एज इवेंट्स के साथ, और खास करके नितेश के ढेर सारी जो कि बधाई दी है। स्वप्निल परब जो पूना से मैच का आनंद ले रहे हैं। और इस बार हवा में, ओहो हो, बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री पर नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई, शायद बाल बाल बचे मेरे ख्याल से। सर्वेश नाइक इस गेंद पर, बहुत दूर का मामला था, मैं नहीं कहूंगा ये मौका, काफी दूर थे फील्डर, बाउट लाइन पर लंबी दौड़ लगाई थी लेकिन गेंद से दूर थे, और जब तक गेंद फील्ड होती एक सिंगल बना। लेकिन एक बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ क्योंकि सिर्फ एक रन दिया और इस ओवर में एक विकेट चटका। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर समाप्त हुए, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
हम नागवेकर आ चुके बॉलिंग बार पर। सामने सर्वेश नाइक और नॉन स्ट्राइकर इन पर बैटर है रुपेश वेलिप। 2 ओवर और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और छोटे गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट पर, फिर से थोड़ी से हवा में गेंद, लेकिन नो मैच लैंड में वाइड स्लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में गेंद 4 रन के लिए। साथ लेकिन गैप में गेंद चली गई। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद के पीछे और ये बिल्कुल गेंद जीतती हुई गेंद चली गई 4 रन के लिए। लेग बाइज का इशारा मिल नाइक। बहुत अच्छी गेंद, आगे निकले थे एक यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बीट करते हुए। ऑफ साइड पर एक स्लीप है, एक गली पर फील्डर है, एक कवर पॉइंट है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन है, एक वाइड लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर और एक शॉर्ट फाइन लेग। छोटे गेंद पुल किया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। करके अगर विकेट की कहानी बता जाए तो इस विकेट पर ओवर पिच और छोटी गेंदें महंगे बन सकती है। आगे निकलकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर किया, डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। शुरू में थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे सर्वेश नाइक टीम के कप्तान, लेकिन अब बिल्कुल लय में आ चुके पिछले मैच की तरह। स्लोअर वन धीमी फेंकी गेंद, एक लोअर फुल टॉस और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर राजेंद्र राबोलकर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा महंगा ओवर समाप्त हुआ राम का, जिस ओवर में 2 बड़े शॉट लगे, एक चौका लगा और टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 12 रन से थोड़ी रन रेट को आगे लेकर जा रही है। 37 टोटल स्कोर 37। और कमेंट्री बॉक्स में से और हम सभी पूरी टीम की ओर से सर्वेश नाइक आपके लिए बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से। आपका आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सर। और हमारे गुरुजी जिनको हम बिल्कुल गुरुजी कहते हैं, सर वामन मयकर, उन्होंने भी आपके लिए ढेर सारी शुभकामना भेजी है। सर्वेश नाइक एक बार फिर से आपको मुबारकबाद, जन्मदिन मुबारक हो। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद, इस बार आड़े बल्ले से गैप है, लंबा सफर, गैप में गेंद निकली, पीछा जरूर।
ओ फिर से उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। छह रन और बने स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 पर पहुंचा। ओ ये हवा में कवर पर, ओहो ये मौका थोड़ा दूर हो गया और गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 4 तो मेरे ख्याल से गेंद बाउंड्री लाइन से ऊपर से भी निकल सकती थी। अगर मगर की बात थी, 50 रन टोटल पूरे होते हुए टीम के, स्कोर पहुंचा 51 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। अल्टी पल्टी वाला शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद, सिक्सर 6 रन के लिए। इस बार चौपाल होकर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक बार फिर से लाजवाब शॉट, जगह बनाई। टोटल पहुंचा 67 रन 4 ओवर के बाद, लास्ट ओवर टू गो। दो अर्धशतक अब तक की अगर बात बता जाए तो कल के दिन में पुनाजी कलंगुटकर, आज कप्तान सर्वेश नाइक का अर्धशतक, लेकिन बिल्कुल अपने टीम के संकट मोचक है और बिल्कुल दूसरे अर्धशतक से करीब है और गेंदबाजी में परिवर्तन, साहिल आ चुके गेंदबाजी के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद ऑफसाइड पर पीछा किया था रूपेश वेलिप, बड़ी देर के बाद मेरे ख्याल से रूपेश वेलिप को मौका मिला। इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा राम नागवेकर ने और को पकड़ा। एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं सर्वेश नाइक का साथ नागवेकर के लिए, जो कि गोविंद प्रभु उर्फ बाप्पा पिछले मैच में ओपनिंग में आए थे। पहली गेंद पर एक अच्छा यॉर्कर पर आउट होकर वापस राम नागवेकर, जो कि मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं
और सलील विकेट के पीछे। इसी बीच अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अच्छा शॉट ऑफ साइड पर कवर के फील्डर को बीट किया, लॉन्ग अप पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 68 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ओ एक अच्छा यॉर्कर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल और बढ़ गया, एक गेंद और बढ़ गई। सलील नाइक, लेकिन उनको ज्यादा एक राजा के नाम से जाना जाता है और विकेट के पीछे है विकेट कीपर। देखना होगा फिलहाल सर्वेश नाइक एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, अर्धशतक, जो टूर्नामेंट का दूसरा। इस बार कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल पीछे गेंद और फिर से जोरदार तालियां, खुद का दूसरा और टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक सर्वेश नाइक। आज जन्मदिन है हरीश सर, बिल्कुल एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं सर उमेश बाबू आसगांवकर और हमारी पूरी टीम की ओर से। अपना बल्ला दिखाइए। थैंक यू सर, बिल्कुल धन्यवाद। अच्छी गेंद, रूम बना इस बार, एक लोअर फुल टॉस लगभग, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, पहला रन, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो विकेट कीपर के पास, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित। 2 रन और बनते हुए थोड़ी सी मिसफील्डिंग और वहीं पर मौका बना जो कि दूसरा रन पूरा किया सर्वेश नाइक ने, स्कोर को आगे बढ़ाया। 77 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस, ये मौका कहां छोड़ेंगे? आपने तो बिल्कुल ये जन्मदिन पर आपको सामने बिल्कुल जो कि तोहफा दे दिया, वो तोहफा कबूल कर लिया। सर्वेश नाइक ने एक लाजवाब लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया, मिले 6 रन स्कोर के खाते में। खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का टोटल और स्कोर हो चुका है 83 रन, 83। मैच को जीतने के लिए चाहिए 84 रन और एक बार फिर से सर्वेश नाइक का शानदार अर्धशतक। आने वाला मैच होगा जो कि मुसाफ चैलेंजर्स और फिर से आवाज सर हरीश काकोडकर की। ग्राउंडार आणि 5 मॅची उरले आमकां खेळपाच्यो, त्या खातीर मातशे बेगीन मॅचीस कंप्लीट जावपाक जाय। फुडली मॅच जातली ती रायझिंग पोंडा मुसाफ चॅलेंजर्स, दोन्ही कॅप्टनाक विनंती करता मातशा टॉसाक येवचो।
Shot. There's India out of here. What a start. He has continued from the previous game. Raju. So Mahabaleshwar comes and what a welcome he's greeted with a 6. Raju once again heaving for the big one. Someshwar Alpekar missing it together, trying to collect it quickly. Take on the eyes of the ball, trying a one-handed pickup and throwing at the non-striker's end. Single taken. India, that was fiercely struck. That was coming very hard at the rate of knots to the fielder. I think he put up a good hand, good evasive action. You might say it's a catch, but it was struck so well, and he is, I think he's much closer. He's not on the edge of that inner ring. I must certainly say it's a 4 runs saved rather than a catch being dropped. 7 on the board. Well timed. What a shot. Just opening the face of the bat and just gliding it to the extra cover region. A flowing drive for a boundary from Ramnagekar. Going for this switch hit. Not a bad intention, I must say. Fielders inside to the square of the offside, and they want to get it over the top. Nicely driven, firmly straight to the man in the middle of. Good over here. In spite of conceding a 6 of the very first ball, he just concedes 11 in the first over, 11 without loss in chasing 84 runs. So Janardhan comes in. Picked up a crucial wicket in the previous game. Dar Sakhar starts chasing that against Rising Ponda. And they have posted a biggest total of the day so far, 83. Down the leg side. Very good decision. Once you take the original stance, you got to play the ball. You cannot change your stance coming inside. Nicely played. Strong shot and good fielding here from Sarvesh. After doing a terrific job with the batting, he's still giving himself for the team and stopping a certain boundary. Well, I was talking about the rule. Your original stance at the time when the bowler is delivering matters. And if you just stay in the stance after the bowler has delivered the ball, the bowler had targeted on your toes, and you have taken the toes inside, your legs inside. That's what the rule says. You cannot change the body posture later after the ball has been delivered.
pulled away, shot, and 6 runs. Moves the score to 18 with that 6. They need many more of those. Just the second one coming so far. One each from both batters. Nicely scooped away. Slow ball, change of pace. We'll be getting just a single. So Meshwar Radhwekar had to cover a lot part of the ground, and Ram Nagwekar is very quick in between the wickets. Too easily taken. But I must give credit to Janardhan as well. He saw that he was trying to scoop the ball finally for 4 runs using the pace, but he bowled a slower leg cutter. This is poor one. Poor delivery. Flicked away easily. And that's 6 runs. Driven firmly, and is going to be a single down the ground. 27. So 27 is what they remain on. 27 without loss at the end of 2 overs. Lots of runs to get. 57 in the next 18 balls. Uppercut shot. This will be a chance. Taken in the backward point. Sarvesh is not doing anything wrong today. He gets rid of. The dangerous Ram Nagwekar walks back. Well bowled once again. Half-hearted appeal from Sarvesh. He's bowling a good length. He's not bowling too fast. Extra player of the Pan Am Strikers. We want the name of all the batters. Extra player of Pan Am Strikers. Please report fast. Arjun. Another good leg spinner. Excellent. He's looking for a wide. Sarvesh is bowling the slow leg spinners. It's all about that good length area. You need to pitch it well. He's doing it fabulous job, and he has got the height to his advantage. He's tall man. This time it was an off cutter, but he is taken for boundary. Slightly short, going deep into the crease and finding a boundary. Score moves on to 4.
He picked it well. He picked the bones out of it. Not too short, not too full, but that's a perfect. They needed a boundary and a 6 in this over. This over was getting a little quiet for them. Another one. Back-to-back sixes here. Straight on the bat and straight out of. So Rupesh, over number 4. This is a nice shot. Nice shot. This is not a bad ball at all, and this. Timing the ball crisply as well with that power. Is looking dangerous. Nice bowling, wonderful keeping as well. That's the problem. Once keeper is there just behind the batter cannot just charge down that place in the mind. Bappa is a fabulous keeper. This ploy certainly, I think these tactics are working here. Another one. This was right in the slot. This is powerful drive over the top. घुमटेश्वराचे ओनर बाबा रमेश होबळी हांगा पाविल्ले तांकां विनंती करता ताणें मातशें माचेर येवचें रिक्वेस्टिंग रमेश होबळी सर टू काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड seated on the chair. We are absolutely pleased to have you here on this venue looking at this Masters Cup. In the air should be taken and a dot ball as well. So good finish here.
So starts off with a leg breaker. Normal orthodox delivery you can call for a left arm medium pacer. So idea is to be not giving too much of pace. So let's see how he reciprocates the plan. In the air, big chance taken in the short extra cover. The super hitter and the super striker Raju Dabolkar departs walking. Yogesh Dabolkar. Satyen. Left-hander has been introduced because they feel is a better option against a left arm spinner. Well bowled, very well bowled here, starting from a wide-ish line. And that's good wicket keeping. That's out, is short of the ground. Bat was in the air, and another one departs. The umpire was in the perfect position. Overall, Darsaka Stars understanding that the match is theirs to win here from this point. Lovely bowling, good flight. Many of the batters don't know to play the leg spinners pitching perfectly, and here is one perfect pitching area. So Darsaka Stars is looking to be 2 out of 2 so far. That's almost a chance. Wide call here. They are well in control. They know that match is already done and dusted for them. They are certainly going with the second victory, Darsaka Stars, but it's been absolutely dominated by Sarvesh batting. Back-to-back half centuries. Poor delivery. Well, making use of the depth of the crease and hammering it down towards the fine leg region for a boundary. Anything in excess of 80 will be a decent total. Anything close to 70 might much be close. Musab challengers are the only one I feel defending such a low total of almost 65 in 5 overs. They bowled really well. And finally, that's a good delivery to finish here from Satyen. So Darsaka Stars have won 2 out of 2. So they will be leading the top of the chart
in this Group A fixtures. They have comprehensively beaten Rising Fonda in the first game, and now they have beaten TOURNMNT Strikers. So they are doing a fabulous job. Sarvesh is the only batsman to hit 2 half centuries so far in the entire day. पावर प्ले का पहला ओवर लेकर महेश साकलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और सामने ओपनिंग जोड़ी मैदान पर विनोद विल्सन और उन्हीं के साथ विकी। तो पहले ओवर की पहली गेंद महेश साकलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया सिली मिडअप पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, और एक बार फिर से महेश साकलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस ओवर को आगे लेकर मुकाबला शुरू हो चुका है राइजिंग फोंडा और मुसाब चैलेंजर्स इन दो टीमों के बीच का। बहुत अच्छा यॉर्कर, बहुत अच्छा यॉर्कर, बिल्कुल बल्लेबाज को मजबूर किया रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए, और वही क्या बल्लेबाज ने सम्मान दिया, अपने पॉलोथ्रो में गेंद को उठाते, फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, लॉफ्टेड शॉट मिड ऑन पर, फील्डर
और गेंद फील्ड होती है भाई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और पिच गए, निकला अपटेक शॉट, थोड़ा सा हमें शॉट मिड ऑन पर 30 यार्ड सर्कल पर, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं था और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। छोटे गेंद इस बार पुल किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर और फिर से एक बार गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। तो ओवर 2 फील्डर बाहर, एक मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर एक लगभग फिर से यॉर्कर लेन की गेंद शफल होकर खेला ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर। ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, मुकाबला जारी है मुसाफ चैलेंजर्स और राइजिंग फोंडा इन दो टीमों के बीच में। और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए मुसाफ चैलेंजर्स, बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग फोंडा। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर हो चुका है 8 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, समीर ठाकुर दिखाई देते हुए उनके हाथों में गेंद और वो आते हुए खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। के साथ ये दूसरे ओवर की शुरुआत फील्डिंग में बदलाव हो रहा है, जो कि पावर पे था वो समाप्त हुआ, स्कोर रुका हुआ 8 पर। ऑफ साइड पर एक बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ पर एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंद हवा में, ओ बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन कैच स्क्वायर लेग बाउंड्री पर महेश साकरकर और सफलता मिलती हुई समीर ठाकुर को पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर और बैकफुट पर इस बार कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर डीप पर आते गेंद को उठाते बाउंड्री लाइन से महेश साकरकर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आते आते पांडुरंग ने अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ। इस बार ज्यादा जो कि बैकफुट पर खेलना चाहते थे, शायद गेंद के टर्न होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गेंद उनको बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
विनोद विल्सन। अल्टी पल्टी वाला शॉट डीप, थर्ड मैन बाउंड्री पर, बहुत अच्छी कोशिश थी, बाउंड्री लाइन पर लगभग हाथ को लगी थी गेंद, लेकिन वो हाथ को लगती हुई उंगलियों को जो कि लगकर गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। टोटल आगे बढ़ा 15 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट, रिवर्स का शॉट, लेकिन सफल नहीं रहे इस बार। बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं समीर ठाकुर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से कोशिश, लेकिन गली पर फील्डर। थोड़ी गैप में गेंद निकलती तो और 1-2 रन बन सकते थे, लेकिन गली पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त। आराम 16 रन 1 विकेट पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में परिवर्तन, नीलेश आ चुके बॉलिंग मार पर। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई पुलर लेन की गेंद, इस बार गेंद जाके सीधी पैरों पे टकराई, हल्का सा अपील, लेकिन स्टंप्स को छोड़कर गेंद निकल रही थी। कोई असर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। अच्छी गेंद, यॉर्कर बिल्कुल ब्लॉक होल में, बल्लेबाज को मजबूर किया सम्मानजनक खेलने के लिए। और वही क्या, विनोद विल्सन ने गेंद को सम्मान दिया, अपने पॉलिथ्रो में गेंद को फील्ड करते नीलेश धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। टॉस जीता मुसाफ चैलेंजर क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग का गेंदबाजी का फैसला। इस बार बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर के पीछे, लेकिन शायद कैच का मौका नहीं बना। गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए जो कि शॉर्ट फाइन लेग से स्लिप की तरफ निकली, लेकिन बहुत ही चौकन्नी फील्डिंग थी, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नीलेश अपने बॉलिंग मार पर, तीसरा ओवर जारी है। इस बार फिर से गेंद, अरे बिल्कुल वहीं पर गेंद निकली थी, बिल्कुल वहीं पर रिप्ले देखने को मिला एक बार फिर से, जो कि शॉर्ट फाइन लेग से स्लिप की तरफ गेंद फील्ड होती हुई और सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद स्कोर थोड़ा आगे बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा, टोटल 7। यह बड़ा शॉट स्क्वायर लेग पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। वो टाइमिंग, वो ताकत नहीं हुआ जो कि लगी गेंद के ऊपर, और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलती हुई नीलेश को। दूसरा विकेट चला गया टीम का। ठीक है, और
एक बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ मुसाब चैलेंजर्स क्रिकेट टीम की ओर से नीलेश का, परशुराम न्यू बैटर। ओ बार बार वहीं पर गेंद जो कि जा रही है, गेंद फील्ड होती है भाई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ जिस ओवर में सिर्फ बना सिंगल, एक विकेट, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 17 रन 2 विकेट। तीन ओवर 17 रन 2 विकेट पर 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत अपने फील्डिंग को ठीक ठाक किया और अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अशरफ। ओ अच्छा यॉर्कर, कवर पॉइंट पर फील्डर रन के लिए निकले, रन आउट का खतरा जी, और इसी के साथ जो बिल्कुल बिना देखे निकले थे रन के लिए, कवर पॉइंट पर गेंद फील्ड हुई, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर रेंज पर, गेंदबाज अशरफ के हाथों में और कामयाबी मिली, तीसरा विकेट चला गया 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, बल्ले का मुंह खोला इस बार कवर पॉइंट की तरफ, फील्डर है, 2 फील्डर लगभग बाउंड्री लाइन पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए, बड़ी देर के बाद एक चौका निकला बल्लेबाजी में और इन ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई सी मारेका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। जो प्रतिकार कर रहे गेंदबाजी का, अब तक 3 चौके 2 छक्के अपने उनके बल्लेबाजी में। फुल टॉस, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर और फील्डर को बीट करते हुए गेंद फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चली गई। एक बार फिर से बड़ा शॉट मैदान पर दिखाई देता हुआ, 3 ओवर पर लगभग खामोश थी बल्लेबाजी, स्कोर को रोक लगा दी थी, सिर्फ 17 रन बन चुके थे, लेकिन ये ओवर में रन बन रहे। अब तक दूसरा छक्का, एक चौका लग चुका है, टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। जो थोड़ा सा बड़े शॉट लगे तो उसके बाद थोड़ा सा गेंदबाज मुश्किल में दिखाई दिया, लाइन पर बैठ के आपने, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। छोटे गेंद, इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट पर, नो मैच लाइन में गेंद गिरते हुए एक सिंगल पूरा किया, दूसरे रन के लिए हाना हाना कर रहे थे। शायद तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ जरूर थी, रनआउट का मौका बन भी सकता था अगर रन के लिए निकलते तो, लेकिन फिलहाल आखिरी समय पर अपने अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में।
सागर, अब स्ट्राइक पर सागर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। शॉट ऑफ लेन ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा इस ओवर में। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35 रन, 3 विकेट पर, लास्ट ओवर टू गो। आखिरी ओवर, ये आखिरी ओवर की समाप्ति के बाद जो छोटा सा ब्रेक होता है उसमें टॉस होगा, आने वाला मैच होगा रोहित स्पोर्ट्स और पेडने स्ट्राइकर्स, दोनों टीम कैप्टन। पेडने स्ट्राइकर्स और रोहित स्पोर्ट्स आपका अगला मैच है। इस ओवर की समाप्ति के साथ आपको आना चाहिए कप्तान को टॉस के लिए और देखना होगा अंतिम ओवर में क्या होता है। एक अच्छी शुरुआत, तेज गेंद, अच्छी लाइन पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। सखाराम आ चुके गेंदबाजी में इस अंतिम ओवर में। सामने अगर मैं बात करूंगा 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में। एक 60-65 के आसपास का टोटल बनाना पड़ेगा। ओवर पिच उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। जिस शॉट की बिल्कुल सख्त जरूरत थी स्कोरिंग में, वही निकला बल्लेबाज ने, मिले 6 रन स्कोर के खाते में। इस बार फिर से शॉट ऑन बॉल और एक बार हवाई फायर, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। मिले और उस पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस बार छोड़ा जाने दिया गेंद को, वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद स्लिप पर फील्ड होती हुई एक सिंगल और बढ़ गया, एक गेंद भी और एक बढ़ गई और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी विनोद विल्सन। ओ ये लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ पर और इसी के साथ विनोद विल्सन के 50 रन पूरे हुए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। टूर्नामेंट का मास्टर्स लीग 2025 का यह चौथा अर्धशतक। पहला पुनाजी कलंगुटकर, आज लगातार 2 छक्के सर्वेश नाइक और अभी अभी मैदान पर लगाते हुए विनोद विल्सन। इस बार ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। रन के लिए नहीं निकले, बिल्कुल सिंगल बनता था, लेकिन मालूम है विनोद विल्सन को आने वाली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। छोड़ा इस बार लेग स्टंप से बाहर और हमारे उमेश आसगांवकर सर जानकारी दे रहे हैं स्कोरिंग के बारे में। टोटल अब हो चुका है जो कि स्कोर 56 और इन 56 रनों में 52 रन बन चुके हैं विनोद विल्सन के बल्लेबाजी में। तो बाकी 4 रन सिर्फ अतिरिक्त जो कि बल्लेबाजों के। छोड़ा, 3 वाइड बॉल, ये चौथा रहा, लेग स्टंप से बाहर और एक गेंद बढ़ गई, 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक नाजुक हालात से उबर कर निकले, 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे स्कोर बोर्ड पर, लेकिन वहीं से लेकर आने वाले चौथे ओवर में और 5वें ओवर में रनों की बौछार हो रही है मैदान पर और खास करके विनोद विल्सन की बल्लेबाजी को दाद देनी पड़ेगी। अच्छा यॉर्कर इस बार
इस बार रन के लिए निकले, एक सिंगल बना विकेट के ऊपर। पहले सोच में थे थोड़ा सा निशाना लगाने के, लेकिन बाद में अपना फैसला बदला। एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में, तो एक ठीक ठाक स्कोर स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता बा। 3 ओवर में 17, लेकिन बाद में बल्लेबाजी रही और टोटल अब जबकि 5 ओवर और टोटल स्कोर हो चुका है 58, 58 रन और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 59 यानी 59 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। आइए प्लीज कप्तान टॉस के लिए पेडने स्ट्राइकर्स और रोहित स्पोर्ट्स, आपका अगला मैच हो रहा है दोस्तों, जल्द से जल्द दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आइए प्लीज, रोहित स्पोर्ट्स और पेडने स्ट्राइकर। तो 58 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। क्या होता है, किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होते हैं, 59 जो कि रन बनाने पड़ेंगे। और आइए जबकि दूसरी इनिंग की शुरुआत, कमेंट्री बॉक्स में आवाज एक बार फिर से सर हरीश काकोडकर। Please come fast. What a good recovery here from Rising Fonda. They were on 17 for 2 after completion of 3 overs, but it was a marvelous innings from Vinod Wilson. Another half centurion. We've seen 2 from Sarvesh, 1 from Punaji Kalangudkar, and now Vinod Wilson, the veteran stalwart, legendary player of Goan tennis ball as well as leather ball cricket, once again proving his mettle and showing he still got that much of class left in it. And now once again he has to take the ball in his hands and he is going to take the charge to bowl. 59 runs is the 59 the target set here for Musab Challengers. They will be pleased. 59 in on this wicket when the sun is very hot on top. The ball travels. All the conditions are favorable here for Musab Challengers to chase this one. And that's the reason why they have opted for Vinod Wilson. He understands that I have to bowl, I have to take the lead, I have to take the charge here to take wickets. Well bowled. And he's been given out. That was definitely an sound coming off something umpire feels it's off the bat. And a catch taken behind the wickets. What a good start. And Anant Mandrekar takes a long walk back. Not happy with the decision, but he has to approve and agree and go back. It's none for one.
trying to go for the extravagant drive. Wide call. All about getting 12 runs per over at this juncture. We have seen teams getting and chasing 15 runs per over. So Musab, but they are not having the best of the starts. Gone over the top. 6 runs. Given a chance earlier on, but they have opted for Ryan up the order at number 3, and that's a powerful shot straight down, showing his intention, showing the talent that he has, but he's up against a street smart customer. Wonderful change of pace, a slower leg cutter, and that decision of bowling the slower leg cutter, it starts from the run up, but there is no intent given and shown to the batter that I'm going to change the pace of the ball. It's at the last moment. So many deliveries that he bowls, and so many wickets he picks up that slower ball. Wonderful talent to have. Down the ground for a single. 9 runs on the board so far with that 6. Once again, Rehan will be on strike. Rehan and Sajjad. High chance of taking a catch. Taken. Rehan also going for a double blow here, second 6 of this over, and that's why we always say Vinod Wilson, you can't take him on every time. You might be successful on one occasion, but he's always successful the second time around. It's 9 for 2. Drives it well. Sakaram, new batter, drives well, but straight to the man, and a dot ball. And a good over here from Vinod Wilson. He starts off, picks up 2 wickets, 9 for 2. They needed those 2 wickets badly. Here comes Vicky Karapurkar. The man who didn't bowl in the previous game now understands that we can be in a difficult situation. We can bow out of the competition. So understanding the contest, he has come on to bowl at the critical time. They needed his services. What a performer he had been over the past so many years. Not only for Goa Police as a new opening spell bowler with the red cherry, but now taking the reins of Rising Punda. That's Vicky Karapurkar. That's Vicky for you. Perfect landing, back of length, not too short. Always liked facing Vicky with the talent that he had in leather ball cricket. Faced him a few times in Kurcharem, in Margao, and he was a fabulous fast bowler with this new ball and also with the old ball. Good shot. Changed his length a little bit.
Slight fumble, and that was good enough for the second run. Oh, that is run out. That is run out. Sajjad just slipped there at the non-striker's end. That too was on, but he slipped and there was no chance of recovery. Third wicket gone down. Musab challengers are in a spot of bother. Little chirpy at the moment as far as the bowling is concerned. The entire team of Rising Fonda, they feel they can make inroads now, and you can get a feel here at the score on 10 for the loss of 3. Run out opted here by the fielding side, and Vicky bowling well, trying to play on the offside, looking for a wide, never there. It was another good beginning here to over number 2. They don't have too much runs on the board, too many, and that's the reason why they need to have good start with the ball. The Thrash comes in. Ah, the spectacular catch. What reflexes here from Vinod Wilson. It was travelling quickly towards the right hand side, and he just plucks it out of thin air. Sensational performance continues from Rising Fonda. 10 for 4. Trying to bowl from round the wicket to the left-hander, coming at number 6. Change of order over here in batting department for Musab challenges. Not working for them. Sakalkar came as 1 down, then came as 2 down in the first 2 games. Now coming at number 6. Looking for a single, but Vicky is quick as well in his follow-through. No chance. Exceedingly good over here, and not contributed with the ball, in fact the bat early on, but now doing a fabulous job with the ball. What a good over this is. Just 1 run and a wicket, in fact 2, 1 in the form of run out. Mahesh Sakalkar. India, this might be one more, this might be difficult chance. Who is taking? No, this was short of the fielder. You can't blame him, he charged hard. Vicky was unlucky not to get one more, but that is at the end of a very, very good over from Vicky Kharapurkar. And 2 was gone, is 11 for the loss of 4. Musa
This is Malinga there once again going for the reverse. There is open space and he finds the vacant space for a boundary. First ball boundary. Hi, this is a chance. This is a big chance and taken in the deep. 6 down. Malinga also goes back and now it's all about rising Fonda. The captain and his star player. Short arm jab shot. It was a Pritesh innings that changed the scenario for Musab Challengers in the previous game when they were reeling on the mat at one point of time. With 23 for the loss of 4 or 5 wickets, he comes and plays an absolutely match-winning knock. That was the difference between both the teams in the end. Punched it for a single. They won't mind. They won't mind. They will be happy with a single there. Just 17 on the board in over number 3. Uppercut shot, another chance and dropped. Enthus has dropped the catch in the short covers. That would have sealed the victory. That would have sealed the victory. Match winner of the previous game. Manoj did everything right there. Back of length, risen on the spot. Enthus not taking the catch, dropping that chance and giving a lifer to Pritesh. Bowling well here, all 3 bowlers. Change of pace. Don't know whether it's a tired approach here from Musab Challenger, but certainly mentally they are tired. They can't believe here that they have 6 down at a time and they had to chase just 59. 3 overs gone. It's 19 for the loss of 6. So from a situation where you hoped 59 might be chased by Musab Challengers, but certainly they have been opened up here by the bowling. They have lost wicket right from the word go, and Rising Fonda never looked back, kept on chipping wickets on regular intervals. Now looking at this situation when 4th and 5th bowling options are being used, 40 of 12, they'll be happy with that. Pandurang.
So looking to charge down the ground, play on a miss here. Pandurang coming in. The same bowler picked up the hat-trick in the first game. Once again, this is class. Back foot punch in the extra covers. No one going after the ball. Well played shot here from the batter. No, towards the right hand side of the field. Back to back boundaries, keeping some ray of hope here for Musab. Another 32 runs needed. Slice in the air, this time taken. Enthus will be very happy after taking that catch. It dropped him in the first instance, but now he will be a very satisfied soul. Poor bowling there, shot down the leg side, and easy pickings here for Samir. And he misses that one. So that's the end of over number 4. Musab challenges on 31 and 28 runs needed of the last over with Pritesh on strike. .28 runs needed of the last over. Should be a single. Man in the deep. Pritesh looking for the big one. We must give credit to Rising Ponda, especially the plan that was changed. Vicky over coming to bowl the second over, I think was the blessing in disguise. He didn't bowl in the last game, and when they were required, he would have been quite handy. He could have definitely picked up one or maybe a couple of wickets, but his presence, his experience come handy here. High, this is a chance of taking a catch. Taken in the deep, they have not dropped any. Samir also takes a long walk back.
and it's all crystal clear now. It's going to be Rising Ponda who will win the second game. Straight back to the bowler. So no steam left, no fight back. In spite of a low total, Rising Ponda right from the start. This bowling change that Vinod Wilson used as a captain, getting himself on to bowl the first over and Vicky second one, I think was the difference. This is an easy chance. Caught and bowl. He takes it, and there is one more that bites the dust. They have they're just coming and walking back, troubling the scorer. (32). And this was a good ball, run out opportunity. New batter comes in. So just a ball left here in finishing off what is going to be a very, very comfortable victory for Rising Ponda. That's a good finish. They have done exceedingly wide call here. The batter has to stay. He was walking back. They are so used to walking back. They are 8 down. Almost every batter that has come has walked back without troubling much to the bowlers and the scorers. Definitely the umpires. And that's it. That's legally over now. And it's a cruising victory here. They will be very pumped up. They will be spirited. They lost the previous game against Darsakar. This victory was definitely needed to boost their morale little higher, and that exactly what they have done. Perfect planning that was done right by Vinod Wilson, scoring a magnificent 50, first coming batting up, but they posted not much total, 59, but they come back strong. Vicky Karapurkar we saw first time bowling in this competition, and that was the difference I feel between both the innings, and that played a very handy part. Meanwhile, next game is going to be Rohit Sports and Platinum Strikers, requesting Platinum Strikers to take the field fast. Match award दिवपाचे आसात. ओदोच्या मॅचीचा प्लेयर ऑफ द मॅच अनडाउटेबली द सुपर स्ट्रायकर सर्वेश, द बिग मॅन, द टॉल मॅन. सर्वेश तुका रिक्वेस्ट करता. आमचे बंटीबाय आमचे स्पॉन्सर, तशेंच क्रिकेटीचे खरे मोगी आनी सगळ्यात मदत करपी सगळे कडेन आसा अशे बंटीबाय हांगा आमचे मदीं आसात. तो एक स्पॉन्सर ह्या नात्यान आमी तांकां हो मान दिता. सर्वेशान हांगा येवचें आनी तो भोवमान जो आसा 1000 रुपयाचें कॅश प्रायज तशेंच ही ट्रॉफी तो तुवें स्विकारचो. तशेंच जी आतांची मॅच जाल्ली आसा ताका फावो जाता all round performance in batting, a magnificent 50, then very cunning bowling performance as well as leading the team from the front. It's Vinod Wilson, player of the match. So Vinod Wilson is requested to come and collect his honours. Ramesh Hubri Bhai. So Ramesh Bhai is going to give away, who is also always supporting Gumteshwar Margaon, supports good cricket, and he has also bought a team in Dambap Premier League. So he is also alongside Bunty Bhai, supporting the good cause, cooperating all the organisers, and
we are pleased to have you. We are honored and pleased to have both the guests to be a part of this presentation ceremony. Vinod Wilson, kindly come up quickly here in the presentation arena. आमचे ज्युनियर्स बरेच खेळटा, तांकां चान्स मेळटा, पूण वेटरन्स खंय ना खंय भायर पडटा कित्याक सिनियर जाले तेंची फिजिकल एबिलिटीज मातशी कमी जालेली आसता म्हणून भायर पडटात. म्हणून हो एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा तांकां खेळपा खातीर, म्हणून हे खूब बरें दिसता आमकां सिनियर्स जावन खेळपाक मेळटा म्हणून हांगा. आनी म्हाका दिसता तूं कामाक पुणे आसता, तूं ज्या तरेन तूं खेळत आशिल्लो काय कितें असो क्वेश्चन लोकांक पडिल्लो आसा, कित्याक ज्या तरेन खेळ्ळा तसो बाकीचो कोण खेळना हांगा, पूण बरें दिसता, मन आमचें बी आनंदीत जाता ज्या तरेन तूं खेळटा. तर कशी आशिल्ली क्रिकेट पुण्याक आनी हांगा येवप ट्रॅव्हलिंग कशें आशिल्लें? एक्चुली पुण्याची क्रिकेट म्हणजे आमी थंय 20-20 खेळटा, अशें शॉर्टर फॉर्मेट नासता थंय 20-20 विकेंडार खेळटा. म्हूण तो खेळपाचो आनंद एक मेळटा, म्हणजे बॉडी फिटनेसा खातीर आमी थंय खेळटा. पूण तो एक आनंद उरता, त्या खातीर बॉडी फिटनेसान उरता आनी एक इच्छा आसता प्रत्येकाची, तेजेर सगळे बाकीचो परफॉर्मन्स डिपेंड करता. जशी इच्छा आसता तशी बॉडी तुमची रिएक्ट करता. पूर्वी तुका तुज्या 250 खातीर आनी म्हाका दिसता तुका बरें यश आवडटा फुडल्या मॅचीक आनी अख्ख्या टुर्नामेंटाक. हॅपी बर्थडे टू यू. तर बर्थडे बॉय आनी सुपर स्ट्रायकर नन अदर दॅन सर्वेश. तसोच विनोद विल्सनाक विनंती करता, आमच्या रमेश हुबळी सर हांगा पाविल्ले आसा, तांच्या कडल्यान तांच्या मानेस्ता कडल्यान तुवें ही ट्रॉफी आनी जे कॅश प्रायज आसा तें स्विकारचें. छोटे गेंद इस बार और पहली गेंद पर शॉर्ट आर्म पर मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर. लल्ला यादव ये ओपनिंग जोड़ी और राजेंद्र दाभोलकर. राजेंद्र दाभोलकर गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस शॉट लॉन्ग ऑफ पर गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर और पहले बाउंस पर गेंद चली गई 4 रन के लिए. एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं सर्वेश गावड़े. आज 2 हाफ सेंचुरी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. पिछले मैच में विनोद विल्सन और राजेंद्र दाभोलकर गेंदबाजी करते हुए. शापालोकर पुलर लेन की गेंद, शायद अपील जरूर हुआ था अंपायर की ओर जो कि राजेंद्र दाभोलकर का, लेकिन गेंद हाथों से विकेट के पर से छोटी थी. शायद जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिला राम नागवेकर का, कुछ न कुछ बिल्कुल करीबी मामला था. छोड़ा, इस बार जाने दिया. थोड़ी सी परेशानी, लाइन पर भटके. इस बार अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में. फुल टॉस उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए. के खाते में
रोहित स्पोर्ट्स और पेड स्ट्राइकर्स। बैकफुट पर कट कैच गेंद हवा में, थोड़ी सी कवर पॉइंट पर शायद कोशिश जरूर रही थी, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। कोशिश बहुत अच्छी थी और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 5 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे राजेंद्र दाभोलकर, सामने अनुभवी खिलाड़ी लाला यादव स्ट्राइक पर। बैकफुट पर बहुत ही लाजवाब स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए। पहला ओवर पावर प्ले का और स्कोर हो चुका है टोटल 23, बिना किसी नुकसान पर। 22 पर खुद के व्यक्तिगत लल्ला यादव। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत। नितेश आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए और सामने बैटर है समीर। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है। ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने फील्डिंग। छोटी गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट पर। ओ बहुत अच्छी फील्डिंग, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते राम नागवेकर, फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 पर 24। नितेश कड़ेकर अपने बॉलिंग मार पर और फिर से थोड़ा परिवर्तन, जो कि शायद लल्ला यादव के लिए ज्यादा, जो कि रिवर्स का शॉट खेल रहे, स्विच चिट खेल रहे, अल्टी पल्टी वाले शॉट। बैकफुट पर कट किया इस बार, कवर पॉइंट बाउंड्री पर। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक सिंगल के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन बन गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 26 पर। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट है, एक डीप लॉन्ग ऑन है। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ है, एक कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। स्लॉग से स्क्वायर लेग पर हवाई फायर और गेंद चलेगी 6 रन के लिए। फिर से एक बार अच्छा शॉट, स्विप के गेंद को डीप पर फील्डर्स कर ले, बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके हैं समीर, जो सामना करेंगे आने वाली गेंद का। स्कोर 33 रन। आगे निकले इस बार बड़े शॉट के लिए, अच्छा शॉट, गैप अच्छी थी, बिल्कुल टाइमिंग अच्छा था और गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स के बगल में, मिले 4 रन और स्कोर के खाते में।
के लिए आ चुके हैं राम नागवेकर। सामने बैटर है समीर। स्कोर है 38 रन 38। फुल टॉस गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। लॉन्ग ऑफ सिबारिका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। अब राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर राम नागवेकर। बहुत अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड। सफलता मिलती हुई राम नागवेकर को। छोटी गेंद इस बार, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। मिड विकेट बाउंड्री पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। खुद के व्यक्तिगत 2 पर पहुंचे और सामने अब एक बार फिर से लल्ला यादव स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। 32 पर व्यक्तिगत। ओह, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई मौका नहीं मिला फील्डर को। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सलील उर्फ मुन्ना आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। 50 रन पूरे हुए टोटल। 51 3 ओवर का खेल समाप्त। आने वाले 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। मैच का स्कोर 51 पर पहुंचा टोटल।
एकमात्र विकेट अब तक समीर आउट हो चुके हैं और उनके आउट होने के बाद खुद के व्यक्तिगत 2 पर सोनराज और 36 रन पर 11 गेंदों का सामना करते हुए लल्ला यादव। छोटे गेंद इस बार पुल के ऑन साइड पर और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन है विकेट कीपर के साथ, बगल में एक गली पर एक कवर पॉइंट पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ छोड़ा, इस बार जाने दिया। गेंद ज्यादा टर्न हुई, टिप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक बाहर की तरफ निकले, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। ओवर पिच एक लेफ्ट हैंड शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर हवाई फायर और गेंद चली गई 6 रन के लिए। खुद के व्यक्तिगत 42 पर लल्ला यादव। बल्ले का मुंह खेला, इस बार स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के। पर दोनों और कभी स्लॉक स्विप लगा रहे हैं, कभी जो कि लेफ्ट हैंड शॉट, कभी बैकफुट पर स्क्वायर कट कर रहे हैं। लल्ला यादव बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए और सामना करते हुए सलील की गेंदबाजी की। सलील उर्फ मुन्ना अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार स्लॉक स्विप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और इसी के साथ अंपायर का इशारा 6 रन का। राम उर्फ लल्ला यादव 50 रन पूरे होते हुए लल्ला यादव के प्ले और एक कैमरामैन के और बल्ला दिखाए लल्ला यादव। थैंक यू। 5वां अर्धशतक टोटल इस टूर्नामेंट का, मास्टर्स लीग का 2025 का। छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ से बाहर, वाइड बॉल, एक सिंगल और बढ़ गया वाइड बॉल के साथ स्कोर के खाते में। ओवर पिच एक बार फिर से लेफ्ट हैंड शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर सिक्सर 6 रन के लिए। थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस शॉट के साथ टोटल 76 रन। इस बार बैक पर कट किया, गेंद के टर्न होने का इंतजार किया, पहला रन पूरा किया, शायद दूसरा रन बनेगा। कवर पर फील्डर जब तक बैकअप कर रहे थे, आते गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो किया, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ सलील का। 4 ओवर और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 78 रन। थोड़ी सी जानकारी, विनोद विल्सन का शानदार अर्धशतक, जो टोटल था उसमें ज्यादा योगदान विनोद विल्सन का। और अब तक की अगर इस मैच की बात बताया जाए तो लल्ला यादव शानदार बल्लेबाज है। टोटल 78 रन और उन 78 रनों में अब तक 60 रनों का योगदान है वो राम उर्फ लल्ला यादव का। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर, और बहुत ही बेहतरीन शॉट ओवर पेज गेंद पर डीप लॉन्ग ऑन पर सिक्सर 6 रन के लिए।
मनोज गेंदबाजी कर रहे, बहुत अच्छी गेंद, एक बड़े शॉट के बाद एक यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंतिम ओवर का खेल शुरू है मैदान पर और स्कोर हो चुका है टोटल 84, 84 रन। इस बार उसी लाइन पर राम उर्फ लल्ला यादव, और अब मात्र जाना पड़ेगा वापस बल्लेबाज सोनराज को। तो सफलता मिलती हुई बड़ी देर के बाद एक टीम को। चल रहा है और इनिंग के बाद एक छोटा सा जो ब्रेक होता है उसमें टॉस होगा, आने वाला मैच होगा मुसाफ चैलेंजर्स और धाड़ सकल स्टार, इन दो टीमों के बीच में। चलिए दोनों टीम कैप्टन प्लीज आइए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। मुसाफ चैलेंजर्स और धाड़ सकल स्टार्स जो अगला मैच होगा। ओवर पिच गया लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। और अपने बॉलिंग मार्ग पर मनोज इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद हवा में, देखना होगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगभग नो मैच लैंड में पहले रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रनों पर टोटल 92। अच्छा शॉट मिड विकेट पर, फील्डर। पिछले ओवर में 27 रन बने, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। दूसरे रन के लिए पलटे लल्ला यादव बिल्कुल थोड़ा सा मेरे ख्याल से थक चुके हैं, जो बड़ी देर से ओपनिंग जोड़ी के साथ जो कि आ चुके थे बल्लेबाजी के लिए, थोड़ा सा थके हुए। और फिलहाल और एक सफलता मिलती हुई फिटनेस स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को। चलिए दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए। मुसाफ चैलेंजर्स और दाड़ सर्कल स्टार्स, फिलहाल लल्ला यादव की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, शानदार अर्धशतक, 69 रन बनाए। लल्ला यादव ने 20 गेंदों का सामना किया, 6 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 7 छक्के, 2 चौके, 20 गेंदों का सामना, 69 रन बनाए राम उर्फ लल्ला यादव ने। टोटल स्कोर हो चुका है 93, 93 रन और 94 रन। मैच को जीतने के लिए रोहित स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम। फिलहाल आइए प्लीज मुसाफ चैलेंजर्स और धाड़ सर्कल स्टार्स दोनों टीम कैप्टन के लिए जल्द से जल्द टॉस के लिए एक छोटा ब्रेक, और उसी के साथ एक बार फिर से कॉम बॉक्स में आवाज सर हरीश काकुड़कर की।
प्लीज फील्डिंग के लिए जल्द से जल्द चलिए रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम। और आइए ओपनिंग जोड़ी पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की। फिलहाल आने वाले मैच टॉस के लिए मुसाफ चैलेंजर्स और दाड़सकर स्टार्स के बीच में आने वाला मैच होगा जो So requesting the captain of the Arsaka Stars Musab Challengers must begin your toss up. Please come for the toss. It's time for the toss of the next game. Starting off with a boundary. Another big one. This is a big total that they are chasing. 94 runs. So far, So 12 runs. Mahesh Sakarkar. Matcha Beginio. Mahesh Sakarkar requesting to come for the toss. Last game for Musab Challengers coming up next. Meanwhile, we are concentrating back on this match. It's 93 on the board. So far, they have posted 11 runs. In fact, 12 runs on the board. Lokesh bowled beautifully in the previous game with a plan. Looking with the same plan. There is no one in the extra cover. Well played inside out. Over covers. Just rolls over for 4. He's up against a powerful striker and the man in form, Raju Dabolkar. He picks up 16 runs of the first over. Is 16 without loss. This time nicely played down the ground. Should be a single.
Picked the bones out of it. That is Raju Dabolkar. He picked him straight from the hand that he was going for the switch it. And there is plenty of runs. Raju very well understands the job cut out for him. It's not going to be that easy. He has to play like a machine gun. Keep on firing. Play and a miss. There will be or play and a miss. But there is going to be no stopping from Raju Dabolkar. He just have to gun all the bowlers down. Target everyone. So again, the problem sometimes is if he plays normal cricket, he can definitely put that ball away for six. But the pressure of the runs is so much. As a batter, you think differently in the mindset. I have to do something different. I have to charge. I have to play differently to get the six. At this moment, he is not playing normal cricket. He is trying to do extra things and in return giving few dot balls. So bowling is on top at the moment. They understand the situation is well within their hands. 2 overs gone. It's 23 on the board. Another one trying to pick the shot on the leg side. They are trying too hard. The problem is sometimes when you try too hard, you don't middle anything because that anxiety creeps in the mind. Anxiety of ball drying up. I need to do something extra. I need to power another couple of sixes, but in doing so, you tend to forget playing normal cricket. That is always happening once you put so many runs on the board. Thanks to Yella Yadav, the way he has put too much on the board so far, and this is high. You never saw it. You never saw it, and the ball runs for 4 runs. Ball just drops landing on the hard part of the soil and just deviates a bit and goes for 4 runs. Wide call here, surprising the bowler. Heaved away on the leg side, high and long as well. What a fabulous pickup shot on the leg side. Cracking shot, absolutely breathtaking. Back foot punch, no one moved. 4 runs written.
Good start here from Santosh. Short ball, slightly wide, yes, wideish line, and wide call by umpire Naresh Parsekar. Need to make things happen here. It's all about big shots. No point of taking singles or couples here. Once again, another wide. So ill-directed bowling so far when there is hardly any pressure on the bowlers. The bowler have a fear that if I concede 25 runs, they will be back in the match. If that happens, that is not a good sign for the bowler. This is the most comfortable situation for any bowler, having 52 required in 2. In the air, finally coming underneath, and he drops it. The batter was heading back. He was only taken 3 to 4 steps heading back to the dugout. But the fielder saying, I will give you one more chance. So many chances given to different batters in this competition. Maybe people have slept too much during the rains. So much rain it was in Goa. Now they are getting into the active mode. Nothing short, absolutely nothing short here from Raja Dabholkar. More pace, and he has to take his walk back. He departs, and that makes the situation even more difficult here. 45 for 1. Whacked straight to the man. Good catch. Back-to-back wickets here. He picked it well, but found the fielder in the deep. Another one departs. It's 45 for 2. Picked another one. Ram Nagbekar coming at number 4. Ram is more sort of a compact player. Yeah, he can get you runs, but these are plenty of runs, so they require hitters. So they send Arjun and Rajan Dabholkar up the order. Penham Strikers have won one that was against Musab Challengers, but they lost the previous one against Darsaka Stars, and they are on the course of losing this one. So they will be matching Musab Challengers and Rohit Sports. That's the third match for Rohit Sports. So these 3 teams will be with 1 victory each after the finish of this game. Looking at the scenario of this prospering of the game. So 4 overs done and dusted. 47 on the board and 47 more to get.
Yeah, this is a long one. All this was the last over to be bowled by Eddie. Another bowler who had played so much of cricket in leather ball, but now he's just enjoying himself in his 50s, I can call him, but he's still not looking like 50s. The same action, very well driven. Not a bad ball at all, but he drives it very well. There was no one on the offside. 4 men in the deep on the leg and only one on the offside. Ram Nagavkar and high chance of for Eddie to get into wickets column, but you can't blame the fielder. It went with the wind. It went with the wind there and gone for a boundary. He has taken plenty of wickets in leather ball cricket, but he picks one in front of my eyes on in tennis as well. So they have accepted the defeat here, the team of TOURNMNT strikers, and they walk back, not wasting much of a time here, and we move on to the next game. That's Dakar Stars. I think it was all about Lalla Yadav this particular match. Once he started flowing just like the way he has, 69, a score of just 20 balls, and I think there was no look back from that point onwards. The way he has played and the way he has shown the signs of getting that old Lalla back in the on the crease on the 22 yards was a sight worth watching, and that is why we always liked Lalla Yadav. Shuk sir. गेंद हवा में इस बार, ओहो, ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद. लल्ला यादव मैच जो कि मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के, और ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों का, मुसाफ चैलेंजर्स और दार्शक स्टार के बीच का. बॉलिंग बात पर महाबलेश्वर सावंत, ये मौका बनेगा जी. विकेट कीपर आते गेंद को कैच को पकड़ते,
गोविंद प्रभु उर्फ बाप्पा और सफलता मिलती हुई टीम को। यादव आ चुके हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। सर नरेश असोंडेकर जिनसे आ तो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। क्रिकेट का एक लंबा सफर डैजलिन क्रिकेट टीम की ओर से। रोहित स्पोर्ट्स उसी के साथ लल्ला यादव और मैन ऑफ द मैच उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्रिकेट का लंबा सफर उनका। आज फिर से एक शानदार बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली और इसी बीच मैदान पर एक बार फिर से रूबरू होते हैं। न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं। सखाराम आ चुके हैं न्यू बैटर स्ट्राइक पर। वो सामना करेंगे महाबलेश्वर की गेंदबाजी का। लेग स्टंप पर यह गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। पुण्या पालकर सर उनके साथ सर नरेश पारसेकर सर सदगिरी नाइक इस मास्टर लीग 2025 टूर्नामेंट के साथ आज एक ग्रुप के मुकाबले हो रहे मैदान पर। ओवर पिच गेंद लेफ्ट शॉट वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकली 4 रन के लिए। महाबलेश्वर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद एक बार बहुत ही शानदार शॉट लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहले बाउंस पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। एक अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी में। ओवर पिच गेंद एक बहुत बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते बड़ी तेजी के साथ एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और जुड़ गया जो कि स्कोर के खाते में। ओपनिंग जोड़ी सखाराम बल्लेबाजी कर रहे 2 चौके अब तक उनके बल्लेबाजी में शज्जत उनका साथ देते हुए और स्कोर रुका हुआ 11 पर। ऑन साइड पास करने पर फील्डर रन लेना चाहते थे लेकिन सही समय पर वापस भेजा सज्जत को। नॉन सेकंड पर बैटर सखाराम ने, नहीं तो रनआउट का खतरा बन सकता था। महाबलेश्वर का पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और टोटल स्कोर है 11 रन। और दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जनार्दन आ चुके गेंदबाजी के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद बोल्ड है उस गेंद पर लेग स्टंप को वो करती हुई पहली गेंद पर जो कि जनार्दन सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए डीजे
न्यू बैटर मैदान पर सफलता हासिल करते हुए जनार्दन अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। समीर ठाकुर न्यू बैटर स्ट्राइक पर, सफल होकर खेला ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से बहुत आगे गेंद गिरी। पहले बाउंस पर बहुत अच्छी फील्डिंग, सही पूर्वानुमान, और समीर ठाकुर ने एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला इस मैच में। इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा, 12 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइटेड गेंद और फिर से एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्डर फील्ड करते लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फिर से एक बार सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन सज्जद के खाते में, टीम का स्कोर टोटल पहुंचा 13 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा शॉट सफल होकर खेला, गैप में गेंद, मिड विकेटर स्क्वायर लेके बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से। फ्लाइटेड गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर, 6 स्कोर आगे बढ़ा 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ ये अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा आगे रखा, इस बार एक यॉर्कर लेंथ की गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकाबला चलता हुआ दाड़ सकस ये मुकाबला। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान आ चुके हैं, सर्वेश गावड़े आ चुके गेंदबाजी के लिए, और सामने बैटर है सज्जद। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, विकेट कीपर के साथ एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, ऑफ साइड पर एक गली पर फील्डर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, और बहुत एक बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर, 6 रन। में ओ अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, और विकेट कीपर बड़ी तेजी के साथ आते, गोविंद प्रभु और बाप्पा गेंद को उठाते, फील्ड करते, और सर्वेश गावड़े धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार टॉप एज लगा, और बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर गोविंद प्रभु का, सफलता मिलती हुई सर्वेश गावड़े को, और दूसरा विकेट इसी के साथ
लॉस ऑफ 3 विकेट। न्यू बैटर और एक मैदान पर रेहान समीर का साथ देने के लिए। सर्वेश अपने बॉलिंग मार पर थोड़ा सा फिर से फील्डिंग को सजा रहे हैं मैदान पर ऑफ साइड पर। आगे निकलकर खेला इस बार और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। एक लंबा शॉट दूर का छक्का 6 रन के लिए। आते आते बड़ा शॉट कदमों का इस्तेमाल करके डाउन द ग्राउंड। ये गेंद जो कि पिछली गेंद पर लेग ब्रेक या ऑफ कटर पेट पर टकराई सामने। विकेट कीपर आते गेंद को फील्ड करते हैं और धीरे धीरे सर्वेश अपने बॉलिंग बार पर। स्कोर टोटल हो चुका है 35 लॉस ऑफ 3 विकेट, 35 रन 3 विकेट पर। ये थोड़ी तेज गेंद लेकिन लाइन पर दिशाहीन। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर में। फ्लाइटेड गेंद, फिर से परेशानी। वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिला स्कोर के खाते में। मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर हमारे बॉल बॉयज आकाश और पर डंबा जो दिखाई दे रहे हैं, जो भी इस टूर्नामेंट के साथ डंबा भी जुड़ चुके हैं। इस बार हवाई फायर, बड़ी देर तक गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन हवा का तेज झोंका और उसी के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद। टोटल स्कोर 43, 43 रन। 2025 और मास्टर्स लीग का आज एक ग्रुप। और लीग का अगर बात की जाए तो मुसाफ चैलेंजर अपना चौथा मैच खेल रही है। एक मैच धाड़सकर स्टार्स का बाकी है और आने वाला मैच होगा राइजिंग पोंडा और पेडने स्ट्राइकर्स के बीच में। इस बार स्क्वायर लेग पर, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। फील्डर को बेट करते हुए गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। छोटी गेंद इस बार और कवर पर अच्छा कैच। बाउंड्री लाइन से लगभग 2 गज अंदर कैच को पकड़ा और सफलता मिली। इसी के साथ और एक विकेट चला गया। समीर ठाकुर आउट होकर वापस डीजे। और एक न्यू बैटर मैदान पर आते हुए समीर के आउट होने के बाद ओवर पिच गेंद लेफ्ट शॉट गैप में गेंद मिड विकेट और स्क्वायर के बीच में गेंद चली गई। 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। नंबर 3 हा म्हणता फुल टॉस नहीं बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक होल में गेंद थे और अच्छा शॉट बहुत जल्दी पिक किया
और गेंद चली गई 4 रन के लिए। चार रन मिले स्कोर के खाते में। समीर आउट डाला। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और स्लॉग से लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। चार ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 60 रन 4 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो। 60 रन 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 4 विकेट पर लास्ट ओवर टू गो। गेंदबाजी में परिवर्तन। सत्येंद्र आ चुके गेंदबाजी के लिए इस आखिरी ओवर में। थोड़ी सी चर्चा भी की बीच में विकेट कीपर ने आकर कि आखिरी ओवर किस तरह से गेंदबाजी करनी है। आगे निकलकर इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। यह गेंद टिप्पा खाने के बाद ज्यादा टर्न हुई, ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल और मिल गया स्कोर के खाते में। 4 ओवर में टोटल स्कोर था 60 रन। टोटल स्कोर हो चुका है 68, 68 रन। 68 रन 5 विकेट पर। और एक न्यू बैटर मैदान पर। सत्येंद्र अपने बॉलिंग बार पर। लेफ्ट हैंडर सामने, लेफ्ट हैंडर बैटर और उनके लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। और जो शुरू में बिल्कुल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं, अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आज के लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए गेंदबाज सत्येंद्र। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए आगे निकलकर एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर। फील्डर है
तो और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल बना स्कोर में और इस एक रन के साथ टोटल पहुंचा 69। भाई साकड़कर एक सिंगल पर आने वाला मैच राइजिंग फोंडा और पेडने स्ट्राइकर्स के बीच में। चलिए दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए, पेडने स्ट्राइकर्स और राइजिंग फोंडा। ये बहुत अच्छी गेंद, प्राइटेड गेंद, लेग ब्रेक गेंद, कट होकर बाहर की तरफ निकली, खड़े खड़े ऑन साइड पर स्विप करना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। राइट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए सत्येंद्र। फिर से फिर की गेंद और रन के लिए निकले, रनआउट का खतरा। देखना होगा क्या हुआ। एक विकेट जरूर जाएगी जो कि वापस टीम की, यानी छठे विकेट का पतन होता। टॉस के लिए संपर्क कीजिए। बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। यानी 74 रन मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे। जो मुकाबला चल रहा है वो है मुसाफ चैलेंजर्स और दार्शक स्टार्स। लेकिन इसी बीच हम एक छोटे से ब्रेक में एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कप्तान आइए प्लीज। दोनों टीम पेडने स्ट्राइकर्स और राइजिंग फोंडा, आपका अगला मैच होगा तो प्लीज आइए दोनों टीम कैप्टन, राइजिंग फोंडा और पेडने स्ट्राइकर। इसी बीच 74 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में। जैसे खेल की शुरुआत एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आवाज सर हरीश काकोड़कर की। प्लीज आणि 2 मॅची उरल्यात ताचे फाटल्यान
Rising Ponda captain has reported here, and Penham Strikers is requested to report immediately. We are awaiting captain of Penham. .74 needed. Sakarkar starts off with a full ball, driven firmly down the ground by Govind Bappa. Someshwar Adpekar and Govind Prabhu has been sent as opening pair once again. Well bowled, beaten with pace, and good line, good accurate line here from Sakarkar, who was expensive in the first game, but he recovered very well in the next two, performing to the expectations and living to the reputation. Flicked away on the leg side. He has played a lot of leather ball cricket in life. Someshwar Adpekar played for CKC Adpai, Agapur Durbat, and is their main two all-rounder, but nowadays he just bats. Picked away, might get a boundary, just away from the fielder, and Govind Bappa gets the first boundary for Dharsaka Stars. Score moves on to 6, single to each, and then a boundary from the bat of Govind Bappa. Sakarkar will be looking to pick up wicket here, straight over the top, might get a boundary, run out opportunity, no, never run of a misfield as the coaches tell us, and Govind Bappa was always clear in the thoughts, not going to risk his wicket at the non-striker's end. Going for the switch hit and perfectly executed wideish Yorker, went right into the legs, and that is exactly what Sakarkar we know about, starting in a very frugal fashion, not taking in the wickets, but he just conceded 6. It's 6 without loss after 1. So they have opted with Nitesh, and the idea, I think the thinking here is Sarvesh is yet not come onto the crease. So let us finish with Nitesh over here when he's bowling to Someshwar Adpekar and Govind Bappa, and let us keep overs of good bowlers like Samir later on. So they are playing a wait and watch approach here. Missed on a full toss ball, run out opportunity. Someshwar Adpekar will be livid with himself, missing out on such an easy one.
And that is what happened. If Sarvesh was there, there would have been more pressure on Nitesh. And he could have maybe captain thinking he might succumb under the pressure. And that's why they have given him the second over. Not a bad thinking maybe. If he can bowl a good over here without even taking a wicket, that will be blessing. Well ball once again, pitching the right areas, full length, not trying to bowl short here. So Nilesh, consecutive balls here and giving singles each. Play and miss. Someshwar Adpekar is swinging wildly, no connection whatsoever. These dot balls are going to pile up more pressure. You can see the ball is turning, and if Nitesh can bowl a good over here, that will keep Musab challengers in the race. Another play and a miss. Well, it's not happening at this moment. These dot balls are piling pressure, not on the crease, but also in the dressing room, in the owner's camp. This time he picks it. Found a fielder. Well caught. Oh no. Very good. Pushing the ball back into play. He knew that he was going outside. The balancer was going outside the rope. Mahesh Sakarkar saves 5 runs. Someshwar thought almost that I got a 6 over there. Trying to break free. Trying to break the clutches here. Put on him by Nilesh. Bappa, guess there's a fielder down there, straight into his throat, and Nilesh strikes. What a good over. This is a very nine for the loss of 1 wicket and 65 runs needed. "65 runs required." Played on the leg side, looking for a single. Someshwar Adpekar now need to give good company to Sarvesh, not giving dot balls. Give as much a strike possible to this big hitter, the great striker. Back-to-back 50s, confidence high, and the bowler confidence automatically goes down when once you see this big man in front of you. Where to bowl to him? He's good all across. Well bowled here by Samir. Someshwar looking for a single, but this is altogether a different bowling approach here. They've got Nilesh in the second over, who has done a very good job, and now the pressure is put right back on the batting side. This is in the air. This should be an easy chance taken, and there is the departure of big man. On duck, and Musab challengers are on a roll.
finally coming underneath and away from him. Nilesh tried hard in the short fine, but it was always leading his stretched hands. Great over from all the bowlers, in fact, at the moment. It's just 11. The score is loitering at 11. This lumbering work will not do any progress for the target in winning the game. Finally, Someshwar Adpekar gets the ball off the meat and gets out of the park. First six after need many more of those. They are far back behind. They need 57 in the remaining deliveries. That is 13. Another one. This is also gone out of the park. Finally, Someshwar Adpekar is coming back into his act. .51 needed of the last 12 balls. 25 runs per over, which means almost 8 sixes in the last 12. A very daunting ask, but has happened in the past, especially on this venue. It's not difficult. Wide down the leg side. Well, he used the angle well. He tried to fire on the legs, maybe just drifting a little bit. Idea, intention pretty good because there is protection for him in the square leg region. This time he strikes good one. Very well lifted and very well played. 6 runs over the wide long. Belted down, and now yeah, you can see some momentum is there for the Artsaka Stars. They are chasing 74. This is shot, absolute marvelous shot here. This was dug out from the offside. He's trying. Not a good, not an easy shot to execute here. But the ball is angling in. He has given himself a little bit of room and opening the face of the bat. Now the bowler is changing the line from round wicket to the wicket to the left hand. Another one. There's a man out there. Will be taken. Yes, it is. Once again went for the inside out extra cover shot. Finding
Straight down the ground. Well fielded. Just going to be single. Brings Someshwar Arpekar back on strike. This time a chance, but gone down. Run out opportunity. They will be looking to pick up one more extra. They have to get as many as possible so that less runs are required in the last over. 37 scored, 37 runs required. Half the path has been reached, but half it is remaining. But the minutes are short. The time is short. The time is running out. That's wide. 36 needed. I think the first and the second over set the tone here for Musab challengers. The over from Malinga and over from Nilesh has given them so much of cushion. Just 9 runs coming off the first two. That always an advantage for the defending side. So another play on the miss that is going to finish over number 4 is 38 and 36 runs required. 6 sixes is the equation of the last 6. In the air, should be another one, or it's going out. It's going out. That's the first 6. The match could have got over then. 6 runs. That's almost a victory there if he bowls 4 legal balls. If Rohit Sports win that one, Darsakar will be staying on 2 along with Rohit Sports. If Rising Front Up win next one against Pernem Strikers, they go through directly. But if they lose, that keeps all 5 teams in the contention for the bowl out. So it's like the yesterday's games. Inshura is winning the first 2, losing the next 2.
some losing the first two, then winning the last two, and that is how all 5 teams ended with just 2 victories for them. And there's a boundary. It's all coming too late. It's a comprehensive victory in the end for the team of Musab Challengers. They've not posted a huge total, but they started well. No man, there was no batter who scored plenty of runs. Everyone scored 15, 8, 10, 12. And finally, it came to a conclusion that the bowling had won the match. So the match changing over, that was not expected to be bowled so effectively. It is Nilesh who has picked up the player of the match by picking up a wicket and just conceding 2 runs in the second over. So Nilesh backs away and takes the player of the match prize, cash prize of 1,000 and a trophy. थैंक यू, धन्यवाद हरीश काकोडकर सर। और मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के नीलेश। ओवर पिच गेंद इस बार एक अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर, और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है मुख्तार भाई कादरी की ओर से।
उन्हीं के हाथों से मैन ऑफ द मैच जो अभी अभी जो मैच समाप्त हुआ, नीलेश मैन ऑफ द मैच। तो मैच चलता हुआ मैदान पर पेडने स्ट्राइकर्स और राइजिंग फोंडा इन दो टीमों के बीच में। अल्टी पल्टी वाला शॉट कवर पॉइंट पर, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। राजेंद्र दाभोलकर और उन्हीं के साथ राम नागवेकर ये ओपनिंग जोड़ी, और मनोज गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले का पहला ओवर। पुलर लेन की गेंद, फिर से कोशिश अल्टी पल्टी की, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक रन बन गया स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मुकाबला आज के दिन का 9वां मैच पेडने स्ट्राइकर्स और राइजिंग फोंडा इन दो टीमों के बीच में। ग्लोर फुल टॉस स्विप करना चाहते थे, गेंद जाके सीधी पैरों पे टकराई और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते मनोज धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर। पावर प्ले का ओवर, दो फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर सीमा रेखा पर तैनात बाउंड्री लाइन पर, दूसरा मिड विकेट पर। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। चले छोटी गेंद इस बार, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, जो गैप था वो ढूंढने में भी असफल रहे, और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद फील्ड होती हुई वापस गेंदबाज मनोज के हाथों में। बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा उछाल लेती हुई खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले का पहला ओवर, एक अच्छी शुरुआत। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त के बाद होने के बाद विकी आ चुके गेंदबाजी के लिए। अल्टी पल्टी वाला शॉट, गेंद बड़ी देर तक हवा पर, कवर पॉइंट बाउंड्री में, नो मैच लैंड में गेंद, दो फील्डर लगभग गेंद के पीछा करते हुए और आखिरकार गेंद उनको बीट करते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दाइनेट से ओवर द विकेट, दूसरा ओवर जारी, सामने बैटर है राम नागवेकर। ओ थोड़ी से फिर से
अल्टी पल्टी वाला शॉट राम नागवेकर का, गेंद थोड़ी स्लिप पर आगे गिरी, लगभग बाल बाल बच गए वहां पर, गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान से। मुकाबला पेडने स्ट्राइकर्स और राइजिंग पोंडा इन दो टीमों के बीच का। ओवर पिच गेंद उड़ाया इस बार लॉन्ग ऑन पर, राम नागवेकर के बल्ले से हवाई फायर, गेंद चली गई 6 रन की। थोड़ा सा हवा का झोंका भी मैदान पर दिखाई देता हुआ, झंडे लहराते हुए। ये बहुत अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रही, अच्छी लाइन पर बल्लेबाज को बीट करते हुए ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था राम नागवेकर ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में भी कि अगली गेंद लेकर एक छोटा रन अप 8-10 कदमों का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद, क्या मौका बनेगा लॉन्ग अप पर, और इसी के साथ पहली सफलता वहां जो कि विकी अपने टीम को दिलाते हुए। बस 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 ओके, लग्नाला जायचं, ओके ओके। न्यू बैटर मैदान पर, लग्न चालू झालं नाही। ओ बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई जिससे ओवर में एक विकेट मिला और इस विकेट के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 20 रन 1 विकेट पर। रोहित स्पोर्ट्स और धाड़ सर्कल स्टार्स इन दो टीमों के बीच। शॉट अप लेन घेने का अच्छी शुरुआत, बैकफुट पर शफल होकर ऑन साइड पर राजेंद्र दाभोलकर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर पिच घेने का अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। शॉट अप लेन गेंद, लगातार कोशिश हो रही है ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर, बैक पर, स्क्वायर लेग पर, मिड विकेट पर बल्लेबाजों की रन बटोरने के, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। स्कोर आगे बढ़ा एक सिंगल के साथ 21 रन पर, 21 रन 1 विकेट पर। विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर, ये एक चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ज्यादा फ्लाइटेड गेंद और थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर ऑफ साइड पर, और ऑन साइड पर है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। विनोद विल्सन, इस बार बहुत बढ़िया शॉट, जगह मिली, गेंद के आने का इंतजार किया और इसी बार
विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए ओवर पिच एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। आखिर में 2 बड़े शॉट लगे इस ओवर में और एक सम्मानजनक के साथ प्रति ओवर रन बनाती हुई पेडने स्ट्राइकर्स मुकाबला जारी है राइजिंग फोंडा क्रिकेट टीम के साथ। इसी बीच और एक परिवर्तन गेंदबाजी में एक लोअर फुल टॉस लॉन्ग ऑन पर सीधा बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्डर के हाथों में राजेंद्र दाभोलकर दूसरा विकेट चला गया। न्यू बैटर मैदान पर अपने बॉलिंग मार्ग पर पांडुरंग ये दो गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का नो बॉल के साथ एक सिंगल और फ्री हिट। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। इस बार फ्री हिट पर बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 और 6 रन के लिए। दलील स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का इस बार फिर से उड़ाया एक स्लॉप से डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा से बाहर एक नजाकत भरा छक्का। आगे बढ़ा 46-46 रन पर। फुल टॉस मिड विकेट पर और एक बेहतरीन शॉट गेंद चली गई 6। स्कोर आगे बढ़ा 6 रन के साथ 52 रन पर। तीसरा छक्का लगातार इस ओवर में। यह बिल्कुल अच्छी गेंद कट होकर थोड़ी सी मिड स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली, थोड़ी नीची भरी गेंद और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। बड़ी देर के बाद एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर पांडुरंग
ऑन साइड पर स्विफ्ट किया, इस बार स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला, गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया, विकेट कीपर के पास एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। थोड़ा सा करना पड़ा जो कि कहना पड़ेगा इस ओवर में, और इसी के साथ 4 ओवर और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 53 रन इस ओवर में। गेंदबाजी में परिवर्तन, परशुराम आ चुके हैं आखिरी ओवर में अपने बॉलिंग मार्क पर, स्कोर 53 रन 53। ओवर पेज गया, लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद चले गए सामने, लॉन्ग ऑफ से मारेका से बाहर, 6 रन के पिछले ओवर में और इस ओवर में बड़े शॉट दिखाई दे रहे हैं। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर और एक नजाकत भरा छक्का, मास्टर लीग 2025 और बिल्कुल बेहतरीन हमारे आवाज आप तक पहुंच रही है, और वो है हमारा डीजे अंकित। थैंक यू डीजे अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी उधर बैठे ना लड़के लोग, उधर और मजा लेंगे। ओह, बहुत ही करारा शॉट, सिक्सर, इस बार फिर से एक बार बड़ा शॉट, लगातार एक के बाद एक बड़े शॉट। पिछले ओवर में 3 छक्के लगे, इस ओवर में अब तक 3 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में भी। सिंगल डबल की बात नहीं कर रही है, छठा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। ये बड़ी देर के बाद एक हो वहां पर फिसले थोड़े से, और एक आसान मौका मिला रन आउट करने का बल्लेबाज को। चलिए मैदान पर देखा और स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली, बहुत अच्छी बात है क्रिकेट की मैदान पर, क्योंकि मालूम था वहां पर जो कि बल्लेबाज फिसले थे वहां पर गिर चुके थे। चलिए स्क्वायर लेग पर, और इस बार वो दूरी कहीं नहीं पार कर सकी, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी, टीम बिल्कुल संकट में थी, मुश्किल में थी, स्कोरबोर्ड पर कोई खास टोटल नहीं दिखाई दे रहा था, तब आकर इस बल्लेबाज ने बड़ी तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की, एक के बाद एक लंबे लंबे छक्के लगाए, टोटल मेरे ख्याल से लगाए उन्होंने 6 छक्के और 11 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए। टीम का टोटल स्कोर 71, लॉस ऑफ 3 विकेट। देखने होगा एक सिंगल बनेगा स्कोर में, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल एक ही रन मिल गया स्कोर में। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, और इस सिंगल के साथ खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का मुकाबला चलता हुआ राइजिंग फोंडा और पेडने स्ट्राइकर्स के बीच में आने वाला मैच होगा। चलिए दोनों टीम कैप्टन प्लीज आइए टॉस के लिए, रोहित स्पोर्ट्स और दाड़ साइकिल स्टार्स, दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए, रोहित स्पोर्ट्स और दाड़ साइकिल स्टार्स। अगला मैच होगा, लेकिन उससे पहले टोटल बन चुका है 73
72 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 73 रन। एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही, 37 रनों की 11 गेंदों की सलील की, और उसी के बदौलत एक अच्छा टोटल देखना होगा फिलहाल किस तरह से मुकाबला होता है। आइए एक बार फिर से मैच के साथ जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में सर हरीश काकोडकर के साथ। एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं, आइए दोनों टीम कैप्टन दाड़ सर्कल स्टार्स और रोहित स्पोर्ट्स दोनों टीम कैप्टन प्लीज आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। In the presentation area, and Darsaka Stars won the toss and opting to field first in the last league game of Group A fixtures. Still is not clear who is going to make through. Everyone is awaiting the result of this game. If Rising Punda wins it, they are definitely going to be through directly with 3 wins. There is no other team with 3 wins. Darsakars have won 2 and they have got a match left. If they win, then both these teams will be directly through. But we certainly don't know which will be number 1, which will be number 2. So anyhow, the ball out will be there depending upon the results of this game and the next game. .73 is the target left for Rising Punda to win and go through. As straight as that. You win and you go through. And it's going to be Vinod Wilson and Vicky. Nitesh the bowler. Poor delivery. Poor delivery. Bang straight over the top. Over the fine leg for 6 runs. And so they begin the proceedings with a sixer. Not a very good delivery. I don't know what bowling. Stay in the race for the bowl out, just like Musab challenges. Musab will also be praying for the victory of Penn Strikers.
That's how these entire league matches are progressing. No one is finishing with their own result. They are awaiting for the result of the other matches. Vinod Wilson has been magnificent throughout as a leader, as a batter, as a bowler. Too short once again, very, very short. And that's once again hooked away over the fence. Back-to-back sixes to well, you can't keep fielding for this bowling. If he's bowling a slow, short, and against Vinod Wilson, he can just hit away anywhere, hit anywhere you want. So at least need to keep the fielders where you need to bowl. If you're trying to bowl full, keep a fielder straight at the long off region, and then one in the mid wicket region. But here, the captain is unsure, the bowler is unsure. Another short ball, another half tracker, and dispatched in. The feet, someone like Vinod Wilson, who uses the depth of the crease very effectively, goes deep, goes and transfers the weight from the front to the back. This bowling is just an ordinary bowling. You can't give away, concede 3 sixes of the first 3 balls when you are defending a total of 73 runs. Another shot, there is no one there, open space, and finds a boundary. 22 of the first 4 balls. Your understanding, this is the power play over. I have to get as much as possible. This time straight to the fielder, and it's just going to be a single. So wicket missing on that marks the end of over, but I think they've got plenty in the first over. Raju Dabholkar. So now the experienced and seasoned campaigner. So let's see what changes is been up with his old teammate Vinod Wilson. Vinod knows the strength of Raju Dabholkar. They have played cricket together for Goa Police for a long period of time. Along with Vicky, all 3 are the past of Goa Police. They have played former cricketers of Goa Police team, strongest outfit in Goa.
in leather ball cricket. Missed by the batter, missed by the keeper. Going down towards the third man region. We'll be looking for a couple. No wicket says one is enough. Wide call. But Raju knows thing or two about Vinod. Vinod knows also little bit of Raju Dabolkar. What are the strengths, how he bowls. There's going to be a great battle here between the two old teammates. Lovely ball, lovely ball. He saw the batter going deep on the back foot and he bowled a perfect yorker, a wideish yorker. That's the best ball. I always say in tennis ball cricket, nothing much can be done. Very good battle, very good game on our hands at the moment with these two stalwarts. Another one. That's exactly where he need to bowl. I told you he knows a thing or two of Vinod Wilson. I'm enjoying this battle here from the commentary box because I know what they are thinking, how Vinod Wilson is thinking and how Raju is thinking. That's why this game becomes even more popular and even more interesting. What up next? Wow. Take that, says Vinod Wilson. I know you'll be bowling over there. This is my answer to your ball. In this battle is Naresh Asolekar and Mukhtar Kadri. This time he misses. One connect, two misses. That's the story. But Raju Dabolkar is keeping his team still in contention. 32 at the moment. They have not picked up any wicket so far. One ball remain. So far just considered 7 runs. Naresh Asolekar, Mukhtar Kadri, Sandesh Thakur playing tomorrow. All eyes will be on them. Lots of viewers will join in. Excellent bowling from Raju. Absolutely magnificent. I just love this over. That only 1-6. That was also not a bad ball, but Vinod got 1-6 somehow from that clutches. That was stranglehold was put by Raju Dabolkar. Enjoying this marvelous battle. I think 1 up for Raju Dabolkar for that special over. End of over number 2 is 32 without loss. In the next 18 balls, Manoj comes in. Ram Nagwekar trying to just maneuver the fielders, doing fine tuning. Let's see whether this bowler brings in some smile by breaking this stand. Breaking this partnership is yet to be broken because 32 runs stand. Although it was kept in check by Raju Dabolkar, but he could not be successful in picking up the wicket. And he gets him. He gets him off the yorker. Targets the leg stump. Wicket tries to go on the leg side, missing it altogether, and finally
lover and also the owner of Black Tigers. Always keeps cricket in his heart. Very spirited, very passionate, and that is how we brought the first breakthrough for his team, getting rid of Vicky Karapurkar. Play an miss here this time from Manoj. Vinod Wilson trying very hard. He knows that the sun is going down, and the ball travels very quickly, especially from 11 to 3 or maybe 4 o'clock. But we are gone past 4:30 at the moment. So he is trying high. It was on the slot and over the top. He went with pace, but Vinod Wilson went hard. Is back. This was targeted on the toes. Vinod Wilson looking for to pick a quick couple of runs, but he was sent back because they cannot afford a run out of Vinod Wilson. He is a match winner. He is a finisher. He knows things or two about taking the team over the target, over the line, and that is why his presence is very, very important for the victory and direct qualifier. Good pace, sheer pace here from the bowler Manoj Harmalkar, and he has done a good job as well. So he'll be happy, Manoj Harmalkar, and that marks the end of over number 3. It's 40 for the loss of 1. .33 needed in the last 12 balls. Still there is a hope. Till Vinod Wilson is there, the fighter is there. They don't have to worry. He can just smack 3 or 4 sixes in the next 12 balls, and the equation will be straight leveled up for Rising Fonda. Rising Fonda owner Dr. Ketan Bhatikar, commendable job here in the Fonda area as the chief guest for the inaugural ceremony. Doing a tremendous job with the ICAM currently being organized in the Fonda region for the people of Fonda and across. And now his team managers, his physios will be watching. Vinod Wilson, although that kept low, that kept very low. And this happens at this point of time. Ram Nagvekar is not someone who is very tall. He is very short stature, so he will not get bounced. The ball is going to skid and keep low. Well bowled, perfect bowling. So he is wearing his length, one back of length, one yorker. Vinod Wilson, he is keeping him gauging at the moment. Shot! Shot! What a shot! Over the top! 6 all the way. Vinod Wilson. That's why Vinod Wilson is rated highly in cricket circles. Another classic shot. No chance. This went like a tracer bullet. It's like
machine gun firing the bullet. No chance. Perfect execution of the back foot, crunching into the covers. 50 up here for Rising Ponda. 23 needed in 8. 23 of 8. Still equation is in the bowling side favor. A 6 and a boundary. Shot once again. This might be one bounce for. Yes, it does in the gap, and there's another 50 here for the super talented and super warrior Vinod Wilson. Runs posted on the board by Rising Fonda. 50 have been scored by Vinod Wilson. What an immense contribution. Match winning. And still he is going hard, going strong. He says that my job is still not over. The job is left. The job of scoring those 19 runs is in my hands. And I will try as much as possible to get a 6 off this ball to get the equation on the level terms. Yeah, Ram Nagwekar is trying to bowl it again. Straight down, half chance. Belted down the ground, slight misfield, but Vinod is not going to scamper for the second. So he has got runs in this over. 18 runs have been kept of the last, 55 for the loss of 1 at the end of 4 overs. 18 needed of the last 6 with Vinod Wilson on strike. Bhushan bowling the last over, and he knows the way Vinod Wilson was hitting the ball. He was looking everything from the long off region, and he must have seen where is the strength. In fact, he's an all-round player. He can play the switch hits, he can play the slog sweep, he can play the bigger lofted shot on the leg side, the pickup shots, and the drives, the cuts as well. We have seen one execution of that. So he's a hard customer to bowl at. Bhushan has to do the job of defending. The onus is on Bhushan and the hopes of his team as well as other teams like Musab Challengers and Rohit Sports. All eyes on Bhushan. Oh! Yeah, he didn't play that. There is no LBW. Vinod Wilson thinking that it's going to be a wide ball, and he just hits his legs there, not offering any shot. But I don't think so. They are going to run anyway. All 5 deliveries will be faced by Vinod Wilson. This is high. This is a chance. Ram Nagwekar underneath it, the best fielder, and he will never drop that. Bhushan it is. What a glorious wicket it must have been in his entire career at a time when all the hopes are high. They are not dancing only in the camp of permanent strikers, but I've seen many in the Musab Challengers and few in Rohit Sport dancing as well, and they will be congratulating
Ocean doesn't have that much of pace, will be a advantage here for the bowling side. Straight down the ground, straight wicket, drops the catch. That will be another wicket, another dot ball. New batter will have come on the crease. So much of calculations involved in the game of cricket. Still 17 runs required. Bhushan has not panicked over there after dropping the catch by the fielder. He knows that he is bowling well. 3 compulsory sixes. No other option. Oh my gosh, he has bowled a no ball. Can you believe that? Can you believe that? Why on earth you have to try this delivery when you are bowling pretty good, even medium paces? Why on earth? Well, he has bowled so well. Now 2 sixes are required in 3 balls. Is it the pressure? Is it the wrong call of bowling a slower ball? When the things are working right for you, medium pacers, you don't try, you never try a different stuff. Once again the match is alive. This will be a free hit. This will be a free hit. What is happening there? Now there is panicky situation. Doing the harakiri. Ram Nagwekar is stopping the bowler in between. It's happening. Everything happening with that ball. And this might go down. This might go over the top. Ram Nagwekar. Oh, he drops it. Oh my gosh. What a match we are witnessing. Goa's star player Sahil Wangankar is also here just behind me. He has also his comments. He is also involved here. He feels that some other way this match could have gone, but he is involved because he is also a cricket lover. He has come all the way to watch this game from Talegaon. There's the love for the game, and he is hoping that the best team wins here. Situation was so different. 17 required of 3. Then comes the no ball, and then comes the 6. What is this ball going to fetch? 6 required of 2 balls. And that's it. They won. They won. Marvelous match and an incredible comeback here from Rising Ponda. Dr. Ketan Bhatikar will have watched on the live age. He will have been in the hot seat and could not believe this victory of this entire team. They were down under the mats when 17 needed of 3, but they have risen like a phoenix from the ashes and then entered and qualified into the next round. A magnanimous game of cricket and that has been witnessed here epically by all the cricket lovers on live age as well as here on this ground.
और सर हसन भाई जिनसे आज तो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। आइए प्लीज विनोद विल्सन मैन ऑफ द मैच। क्या मुकाबला समाप्त हुआ, एक जो बीमर गेंद नो बॉल और वहीं पर जो बिल्कुल जीतने वाले मैच हाथों से छूट गई पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की ओर से। रोहित स्पोर्ट और दाड़ सकल स्टार्स के बीच में मुकाबला शुरू हो चुका है और पहला ओवर पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए महाबलेश्वर सावंत जो दिखाई देते हुए और ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर। रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम की लल्ला यादव। अरे आवाज कमी आलो भाई, याचा आवाज कमी आलो। और पहली गेंद पर अल्टी पल्टी की कोशिश लल्ला यादव की, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, एक अच्छी शुरुआत महाबलेश्वर की गेंदबाजी में। मुकाबला रोहित स्पोर्ट्स और धाड़ सकल स्टार्स इन दो टीमों के बीच का। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला, मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं और एक डॉट गेंद के साथ अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर बैटर है राम उर्फ लल्ला यादव और नॉन स्ट्राइकर रेड पर है समीर। विनोद विल्सन आइए प्लीज ऑन साइड पर फिर से मिड ऑन पर फील्डर। पिछला मैच जो समाप्त हुआ उस मैच के मैन ऑफ द मैच। आइए प्लीज विनोद विल्सन मैन ऑफ द मैच। हमारे हसन भाई जिनसे आता तो आपको ट्रॉफी और नगद इनाम। शायद पहले बिल्कुल मन बनाया था लल्ला यादव ने, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। फिर से छोड़ा ये गेंद, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते वाइड बॉल के साथ और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम के। टोटल स्कोर आगे बढ़ा 2 पर। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर डीप पर फील्डर और गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो बाउंड्री लाइन से सीधा गेंदबाज महाबलेश्वर सावंत के हाथों में और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। लल्ला यादव अपना खाता खोलते हुए 1 पर सामने बैटर है समीर जो सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। पावर प्ले का ओवर मैदान पर जारी। आज के दिन का 10वां मुकाबला। मिड विकेट पर फील्डर लास्ट बॉल 6 मार लेते कोण तो अनाउंस केला देऊया तसा बदलूया त्याचं काय आपल्या काय अमीर ओके विनोद भाई आले ना। आइए प्लीज अमीर आइए, अमीर मैन ऑफ द मैच पिछले मैच क्या। अमीर आइए प्लीज और हमारे हसन भाई जिनसे आ तो आपको शानदार ट्रॉफी दी जाएगी मास्टर लीग 2025 ए ग्रुप के आज मुकाबले चलते हुए मैदान पर। थोड़ी से अंदर आती हुई गेंद बैकफुट पर कट करना चाहते थे कवर पॉइंट पर। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, अच्छे ओवर की समाप्ति होते हुए महाबलेश्वर सावंत की। पहला ओवर जो पावर प्ले का और स्कोर रुका हुआ सिर्फ 4 रन जो कि स्कोर पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में बदलाव और जनार्दन आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। सामने बैटर है समीर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर लल्ला यादव। पहले ओवर में थोड़ी सी धीमी शुरुआत
रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम की एक अच्छा ओवर महाबलेश्वर का, सिर्फ 4 रन, जो कि कोई बड़ा शॉट के लिए मौका नहीं दिया बिल्कुल पहले ओवर में, और अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है। रुपेश वेलिप ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 5 पर। अब तक की अगर बात की जाए तो अतिरिक्त रन ही ज्यादा बन रही है। तीसरा जो कि वाइड बॉल, ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंदकंदों का ज्यादा इस्तेमाल किया था, और जब तक मिड विकेट पर आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। विकेट के पीछे गोविंद प्रभु उर्फ बाप्पा, थोड़ी सी चर्चा गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में कि किस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए, और वही चर्चा होकर आकर गेंदबाजी के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर रुपेश वेलिप। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, ऑफ साइड पर नजदीकी फील्डरों का बिल्कुल घेरा। ओ ये लोअर फुल टॉस लेग स्टंप पर, लेकिन फायदा नहीं मिला। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। ये बिल्कुल वाइड बॉल का सिलसिला इस मैच में शायद थोड़ा सा जारी है, दिखाई देता हुआ धाट सर्कल स्टार्स क्रिकेट टीम की ओर से। ऑप्टम से बाहर, और एक बार अंपायर मुड़ते हुए वाइड बॉल का इशारा करते हुए, और एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, फील्डर है मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग, शायद अब फिसले वहां पर, किनको फील्ड क्या थ्रो किया, ओ देखना होगा, लेकिन फिलहाल निशाना नहीं लगा। लेकिन स्ट्राइक एंड पर थ्रो होता तो शायद करीबी मामला बन सकता था। फिलहाल 2 रन बने स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी फील्डिंग सर्विस की, जो लॉन्ग अप बाउंड्री पर अपने टीम के लिए लगभग 2 रन बचाए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद रनआउट का भी खतरा बन चुका था मैदान पर। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लेकिन फील्डर है मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। रुपेश वेलिप बिल्कुल लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं। दोनों बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए, क्योंकि दूसरा ओवर जारी है। 5 ओवर का टोटल मुकाबला है। मास्टर्स लीग 2025 एक ग्रुप का आज ये 10वां मैच। यह बड़ा शॉट, लेकिन फिर से वो चक्रव्यूह को भेद नहीं कर पाए जो बड़े शॉट के लिए बिल्कुल, जो कि दोनों बल्लेबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं। रुपेश वेलिप छोटा रन अप 7-8 कदमों का, सामने बैटर है लल्ला यादव। और ये छोटी गेंद मिली, इस बार पुल किया स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। पहली बार थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, और वहीं पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, कड़ा प्रहार किया लल्ला यादव ने, मिले 6 रन स्कोर में। तो इस बार फुल टॉस बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक मौका जरूर था फिर से एक बार बड़े शॉट के लिए, लेकिन फील्डर है मौजूद बाउंड्री लाइन पर, गेंद को उठाते फील्ड करते लगातार शायद लल्ला यादव 2-3 बार इस शॉट पर परेशान रह गए। मौका था चौके का, लेकिन सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। खेल इसी बीच समाप्त हुआ 2 ओवर का, और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन।
ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन। अब आ चुके जनार्दन, जो पिछले मैच में आ चुके थे, थोड़ा सा रुक चुके थे। रुपेश वेली आ चुके थे। यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छा शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर, और गेंद को आते उठाते मिड विकेट से उससे पहले बैकअप हो रहा था मैदान पर, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 20 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 20 टोटल। अच्छा शॉट, और फील्डर है मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो अच्छा विकेट कीपर के पास, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एकमात्र बड़ा शॉट जो पिछले ओवर में थोड़ी सी छोटी गेंद पर रुपेश वेली पर लल्ला यादव के बल्ले से, लेकिन वो बात छोड़ी तो लगातार सिंगल डबल पर अंकुश लगाया है गेंदबाजों ने। शपलकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद कवर पॉइंट पर फील्ड होती हुई, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। मुकाबला 10वां आज ए ग्रुप का रोई स्पोर्ट और डार्ट सर्कल स्टार्स, इन दो टीमों के बीच का। वो कैच का वीडियो आपका वायरल हुआ, अच्छा पकड़ा है, पकड़ा क्या और छोड़ा, वो दोनों पकड़ा, वो छोड़ो। आगे निकलकर बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ सी बारेका से बाहर, सिक्सर, 6 रन के। इस पर पहुंचा, टोटल स्कोर। बहुत अच्छा शॉट, कदमों का इस्तेमाल करके डाउन द ग्राउंड आगे निकलकर समीर के बल्ले से। इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, फिर से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए चली गई। डीजे, बिल्कुल डीजे भी आज बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, डीजे अंकित। 32 रन टोटल स्कोर। ओहो, शायद आगे निकलकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत अच्छा रोका। बल्लेबाज थोड़ा सा चकमा खा गए गेंद के साथ, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग। फुल टॉस, स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में, और एक सिंगल। टोटल स्कोर पहुंचा 34 रन पर, 34 रन टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाले 12 गेंदों का यानी 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। मुकाबला डार्ट सर्कल स्टार्स और रोई स्पोर्ट्स, इन दो टीमों के बीच का। कप्तान आ चुके हैं अब गेंदबाजी के लिए, सर्वेश गावड़े। खुद का पहला, टीम का चौथा ओवर। छोटी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन पर सिक्सर, 6 रन के लिए। और अगली गेंद सर्वेश की। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी कीपिंग, स्टंपिंग किया, अंपायर की सहमति अपील को उंगली ऊपर, और इसी के साथ सर्विस को मिलती हुई सफलता। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बाद में कमबैक, और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ।
न्यू बैटर संदीप आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जो सामना करेंगे सर्वेश की गेंदबाजी का। सभी खिलाड़ी 40 प्लस, 40 साल से आगे इस मास्टर लीग 2025 में। एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन, अच्छा विकेट है, अच्छा आउटफील्ड है। यूट्यूब पर भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण के साथ, लाइव इवेंट्स। एक बार सभी का स्वागत है। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ पर गेंद चली गई। आते आते संदीप के बल्ले से लाजवाब 6। रन के लिए आक्रामक रवैया अपनाए हुए, दो बड़े शॉट के साथ खुद के व्यक्तिगत 12 पर बल्लेबाजी करते हुए बराड़े बल्ले से ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर 50 रन टीम के पूरे होते हुए टोटल आगे बढ़ता हुआ 53 पर, एक विकेट पर, एकमात्र विकेट समीर का जो, और उसके बाद आते आते संदीप ने 2 लाजवाब छक्के लगाकर खुद के व्यक्तिगत 13 पर, और लल्ला यादव स्ट्राइक पर अब सामना करते हुए। अब तक उनके बल्ले से एक चौका लग चुका है, मैदान पर छक्का लग चुका है सर्वेश की गेंदबाजी का सामना करते हुए। 53 टोटल। और इस बार बेहतरीन शॉट लल्ला यादव, डीप मिड विकेट पर गेंद, 6 रन के लिए। टोटल 59। पिछला ओवर महंगा साबित रहा, 25 रन बने जो पिछले ओवर में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही बेहतरीन ओवर पेज गेंद पर एक बहुत ही शानदार शॉट, काउ कॉर्नर पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। पुलर लेन की गेंद, इस बार हल्का सा अपील, रन के लिए निकले थे आगे, लेकिन जैसे ही देखा गेंदबाज तेजी के साथ आ रहे हैं, सत्येंद्र अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर। 65 टोटल स्कोर, 65 रन। आखिरी ओवर का खेल जारी है। आगे निकले, सामने खेला, इस बार अपने फॉलो थ्रो में शायद तो ताकती शॉट में थोड़ा सा हाथ को झटका रहे हैं, थोड़े से गेंद लग चुके हैं निश्चित रूप से अपने फॉलो थ्रू में। सफल होकर खेलना चाहते थे इस बार, गली पर थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में लेग बाइज के साथ। 66 रन अंतिम ओवर का खेल, आखिरी ओवर जारी है और सामने अब लल्ला यादव स्ट्राइक पर सामना करेंगे। स्लो ओवर 1, इस बार फाइन लेग पर अच्छा शॉट, कोई फील्डर दूर है और गेंद देखना होगा रुकते है या नहीं, रुकते है या नहीं, और देखा जाएगा। लगभग गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा, 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
72 70 70 रन। ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, सिक्सर। 6 रन के लिए, 6 रन के साथ टोटल पहुंचा 76 और मैच को जीतने के लिए requesting the batters to please quickly walk onto the ground. Yes, the openers made their way out in the center, chasing the target of 77 in 5 overs. बी ग्रुप का एक टाइमिंग बोलो। नहीं, बी ग्रुप बिग ग्रुप ना, 9 बजे है इधर टाइमिंग। नहीं 8:45 8:15 रिपोर्टिंग टाइम है, 35 टॉस 9 बजे मैच था। So the tomorrow's timings teams should report sharply at 8:15. The toss time will be 8:35. The play will commence sharply at 9. So requesting all the playing teams tomorrow sharply report at 8:15 a.m. At this very venue of Sports Complex Ponda. So here is the first ball of the second innings. Darshaka Stars chasing 77. First ball up in the air and it will go beyond the boundary line. It will be the So Rupesh taking the ball of Octonal from the very first ball. This is a power play over. This is the over where the batter will try to cut loose because only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle, and he will take the advantage of it. This time, once again up in the air over the infield. The ball is racing towards the boundary, well stopped by that fielder.
Couple of runs added to the tally. The tally takes to 8 runs. Couple of runs taking the tally to 8. So fire start from the batsman Rupesh. This is needed. This is needed when you are chasing the target of 77 in 5 overs. Wide. Another extra edge to the tally. This will definitely help the batting side, not the cause of the bowling side. The bowler will have to tighten his line and length. This time once again a good looking shot down the ground. The fielder will cut it off. It will be just a single to get Someshwar on strike. The score raising to 10 runs. Still the first over, the power play over is this time once again in the air, and once again will clear the boundary handsomely. It will be maximum. None. Samir to bowl the first of the non-power play overs. Now the fielding side can afford more than 2 fielders outside the 30-yard circle. Samir adjusting his field. This time strong in the air, but not in control. And this will be the first wicket. It's giving them a quick explosive start that was required, and to replace Someshwar it will be
Sarvesh, the skipper, works out at number 3. 250 so far in this league for him, and will look to continue from where he left off in the crucial match, as this one is. Next ball from the bowler. This time once again India, chance for the keeper, and gracefully accepted. This is the second wicket, and the skipper walks back to the pavilion without troubling the scorers. The score remained on 21 for the loss of 2. It was 21 for the loss of 1 early on. It's 21 for the loss of 2. Over to you, DJ. Yes, it's 2 wickets down in quick succession, and bowler will be on hat-trick. And we have one of the finest cricketers of Goa, Sahil Vaingankar, watching this match on this very ground. He's a decent cricket lover, so changes are being made in the field. This time a shortish delivery. Given the treatment what it deserved, it is a maximum. What a 57. Another 50 required in 20 deliveries. So still the target is in check. The reason I say this is the batsman on strike. Yes, once again a good comeback by the bowler after being hit for that maximum by Bappa. He's a batsman who can take the bowler to the cleaner, so whatever situation it is. This time once again comes down the ground, well identified by the fielder, well fielded, well done to the fielder. Definitely stopped those 4 runs. So 2 runs being saved, definitely saving that boundary, but a batsman picking up those 2 runs. And 2 runs being saved. These 2 runs might play a very well role in the moments coming forward in this match. The score for the loss of 2 after the and one of the finest stalwarts of Goan cricket, Lalla Yadav, into the attack from the commentary box, and on strike it will be Rupesh to face him. First ball, India. The bowler running forward and taken. What an effort by Lalla Yadav. Is down, but
He is more than 50, I guess, can tell you. But this effort, bowling a ball, then running backwards and taking the catch is never easy. At a young age as well, and doing it at this age is quite remarkable. The third wicket has gone down at the score of 29. Still, the match is on for both the teams. Rishikesh walks in. India, this might be taken as well. Yes, second wicket in the row for Lalla Yadav. And it's the half team back in the shade for just 29. The bowling side are putting a great effort after they have posted a great total on the board. They are doing well. So Lalla Yadav is on hat-trick. The new man walking in to face a hat-trick ball from Lalla Yadav is a dot ball. A hat-trick being missed, but this is the type of bowling. 21, 29 is the score on the scoreboard still. Meanwhile, a single. Can they turning back for second? No, they don't. They don't. So with the single, the score will after a long time be changed on 30 for the loss of 5. Bappa looks like to be a man that can take this team home. This time a slower one couldn't pick it up. Swing and a miss, a dot ball. Now mind you, every dot ball will create immense pressure on the batting side. The Rohit Sports might think every dot ball they bowl, every wicket they take, they are making their way towards that victory mark. This time along the carpet, down the ground will just be the one. The score will take away to 31 with the single. 46 still required. 12 delivery, final 12 deliveries, 2 overs, 46 to get. This is the equation. Over to you, DJ. And Bappa, the man to face him. The penultimate over of the innings. This time left alone, but no reaction from the umpire. That means it's a legal delivery. What a bowling this is from the left arm. Bringing all his experience into the ground. This time another swing, another miss. It's looking like only the keeper and the bowler is playing on this deck in this over. 3 consecutive dots and 3 balls have walked towards the keeper.
This time, after a long time, Bappa launches and launches for a boundary down the ground. Hello. The two on-field umpires are officiating this match. Along the ground this time, the ball racing towards the boundary. Yes, it is a boundary. The score moving to 39. It sums up the penalty made over after the completion of 4 overs. That is 39. So all three teams be ready. It will be a ball out after this last over, last 6 deliveries. be ready. चांगला आहे का वो याच्या खाली चांगला आहे Please be ready. एका चांगला पहिले तो तोंडात त्याच्या सांगतो पुढे सांगणार की Last over. First ball, well saved. Well done once again. Single being taken. ये जाय मागे सेमी Last over. Last 5 deliveries to go. This time, once again, a shot down the ground, and it will be a boundary. From 4 deliveries is the equation. गाड़ी में ना कल क्या ये लाजम थी वेरी इंपॉर्टेंट वाह दो डालेंगे अंदर अभी चाहिए पड़ेगा पेपर नहीं ये नहीं चाहिए कल से मजे कल से दोन मजे This time, a long handle being used. It will be a maximum shown by. Who is resting and taking a breather. This time up and over the infield, and it will be a boundary. Bit of a flurry in this last over, but Rohit Fords might have stepped in the winning ways. The ball is straight away across the commentary box, and it was quite threatening for us sitting in the. Requesting all three teams to be please be ready, and this sums up the over. This sums up the match as well. We will be moving to
to that bowl out stage, requesting all three teams. The DJ to please hold on. Is the start of the bowl out. The first team has already qualified. It's the time for that second position to be decided, and it will be decided on the bowl out.
So the stage is set for that ball out. Requesting the bowlers, all 5 bowlers, to be on their bowling mark. All 5 bowlers of all 3 teams. First, it will be Rohit Sports. He misses. Musab challenges. It will be Malinga. Can hit to give the lead. He misses. That circle with their first chance. He misses. Still, all 3 teams are attacked on 0. Once again, it will be a Rohit. He misses. Musab. He misses. That's a goal. He misses once again. Still, it's all 3 teams stacked on 0. Once again, it will be Rohit Sports. Lala Yadav. He misses. Musab challenges. Oh, missed by a whisker. Missed by a whisker. He misses. Still is 0. And all 3 teams are still with the chance. Rohit Sports once again. He misses. Musab challenges. Up next.
Again misses. Hello. He hits. That means Dasakan Stars have led this ball out. Last chance in for last one throw each, one attempt each for all three teams. Situation is Dasakan Stars leading the ball out. Last round. It's road sports. All tense situations, all pressurizing situations. Musab challengers and road sports. They might be thinking, we should and we will hit this target. He misses. He misses. Every missed opportunity will bring smiles on Dasakan Stars' face. Misses. That means it's Dasakan Stars who is the second team to qualify from this group. What effort this is! Sameshwar, the man doing it for Dasakan Stars, and they are through, and they are the second team to qualify. Rising Ponda and Dasakan Stars, the two teams that have made through from this group, and we will be saying congratulations to both its teams. And with this, we round off the action for the day from this Masters League. We will join you tomorrow morning sharp at 9 o'clock with the first match action. Till then, thank you and have a great day ahead.